Thus, for 1 month, girls carried out vow properly worshipped. Properly मतलब जो भी उन्होंने व्रत अनुष्ठान कर रहे हैं ठीक से कर रहे हैं, आधा मन ऐसे नहीं। क्योंकि हम लोग जैसी अभी एकादशी व्रत रखता है, राइट? एकादशी का मतलब क्या है? वो सोच कर करना। हम लोग भी एकादशी व्रत रखा है, मगर उसमें क्या लिखा है? हमारा मन भगवान का स्मरण में ज्यादा रहना, राइट? उपवास पास में रहना, राइट? मगर उसी दिन हम ऑफिस जाएगा तो बहुत कुछ बात करता है, राइट? गपशप भी बोलता है कभी मतलब वो नहीं है। सो यहाँ यही लिखा है, प्रॉपरली वर्शिप द गॉडेस ऑफ भद्रकाली, फुल्ली अब्सॉर्बिंग देयर माइंड्स। ये देखिए आगे जो लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए श्लोक में भी क्या बताता है, देखिए, कृष्ण चेतसः, चेतना पूरा भरा हुआ किसका? कृष्ण का। हमारा चेतना भी भरा हुआ है किसके ऊपर? विचार, परेशान, बहुत कुछ नहीं। ये भी देखिए, अगर हमारा कंप्यूटर में, राइट, क्या लिखता है? मेमोरी फुल, मोबाइल में जो भी है, राइट, फिर क्या करना पड़ता है? सफाई करना पड़ता है। यहाँ तो थोड़ा सफाई करके बाद में भर सकते हैं, मगर यहाँ तो क्या है, पूरी तरह से क्लीन करना पड़ता है, फिर आके बैठ जाएगा, मगर कभी होएगा पता नहीं so it's a very interesting, so we have to keep our consciousness completely clean, then the Lord will come and easily sits. Okay, so यहाँ गोपियों ने कैसे किया? Absorbing their minds in Krishna fully, right? यार एक पैर उधर दूसरा पैर उधर, ऐसा। So this is also very important. In meditating upon the following thought, क्या लिखा है उसके अंदर? उनका मन का भावना क्या है ये देखो। Following thought, may the son of King Nanda become my husband. यहाँ एड्रेस किसको कर रहा है? सन ऑफ नंदा। कृष्ण का नाम भी नहीं लिखा है, इसलिए क्या लिखा है? नंद सुत पति ही अरे कृष्ण, ये श्लोक तो बहुत सरल है, हम लोग पढ़ते हुए उसको अनुवाद मालूम होना चाहिए। अरे श्लोक का संख्या 6। उषसी, उषसी मतलब क्या है? उषक काल। उषक काल क्या है? प्रातः काल को बोलते उषक काल, मलयालम उषक काल बोलते हैं, राइट? उषसी उत्थाय गोत्रैः स्वैर अन्योन्या बद्ध बाहवः कृष्णम् उच्चैर जगु यान्त्यः कालिन्द्यां स्नातुम अन्वहम। स्नातुम मतलब स्नानम, स्नान करना, स्नातुम। ओके, अच्छा। विबद्ध, विदर्भा माता जी पढ़िए। पूरा नाम हमेशा मैं गलती से, पूरा नाम क्या है माता जी? विदर्भा, विदर्भ, विदर्भ सुता देवी दास। हाँ, हिंदी नहीं आपको पास? उषसी तड़के, उत्थाय उठकर, गोत्रे है नामों से, स्व है अपने अपने, अन्योन्य एक दूसरे का, आबद्ध पकड़कर, बाहवः हाथ, कृष्णम कृष्ण की महिमा हेतु, उच्चैहि उच्च स्वर से, उच्चैहि स्तवैहि उच्चावचैहि। किसी को याद है? भगवान नीति बंदे दंडवत। उसके बाद, उसके बाद नहीं है दंडवत, उसके बाद शिरोर शिरोमत पादेयो इत्वा भावो ज्ञान च परस्परम प्रपन्नम पाय माम विश नित्य मृत्यु हर हर। वेरी गुड। ये 11वां स्कंद में अध्याय 27 में जैसी भगवान बताता है वहां अर्च विग्रह का उपासना कैसे करते। ये श्लोका नंबर 4, 5 ऐसे याद है, 11, 27, 4, 5 ऐसे। हरे कृष्ण। सो यहाँ आगे बढ़िए माता जी। जब वो गाने लगती या जाते हुए कलिंद्याम यमुना नदी को स्नान करने के लिए अनुअहम प्रतिदिन
अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। प्रतिदिन वे तड़के उठती, एक दूसरे का नाम ले लेकर वे सब हाथ पकड़कर स्नान के लिए कालिंदी जाते हुए कृष्ण की महिमा का जोर जोर से गायन करती। इस ऐसे ही वहां तिरुपावी में होता है। देखिए, अन्यों ने एक दूसरे को उठाता है, कभी प्रातः काल में उठाते हुए कैसे भगवत विषय बात करके। क्या लिखा है? लाउडली सिंगिंग, जोर से। देखिए, इसलिए ये तिरुपावी का महत्व ज्यादा है श्री वैष्णव में, और जितना भी दक्षिण भारत में सब लोग इतना उनको उपासना करने वाले, और कोई नहीं है। कौन है वो? श्री आंडाल नाचार्य स्वयं भूमि देवी है। सो उन्होंने ये कृष्ण भक्ति का आगे कैसे करना करके हर एक को उठाती है, राइट। सो वंडरफुल। व्हाइल गोइंग टू बाथ, वो लोग भी ऐसे ही स्नान करने के लिए जाते हुए सबको उठा के लेके जाते, राइट। हरे कृष्ण। नद्याः कदाचित् आगत्य तीरे निक्षिप्य पूर्ववत् वासांसि कृष्णं गायन्तो विजह्रुः सलिले मुदा। रूपानुगा थोड़ा जोर से। श्रील प्रभुपाद के शिष्य नदी के कदाचित एक बार अगत्य आकर तीरे तट पर उतार कर पूर्वयत पहले जैसा वसांसी अपने वस्त्र कृष्ण के विषय में गाती हुई विजह खेलने लगती सलीले जल में मुदा प्रसन्नता पूर्वक। अनुवाद। एक दिन वे नदी के तट पर आई और पहले के भांति अपने वस्त्र उतारकर जल में कीड़ा करने लगी और कृष्ण के यश का गान करने लगी। श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार यह घटना उस दिन की है जब गोपियों ने अपना व्रत पूरा किया और जिस दिन पूर्णमासी थी। अपने व्रत के भली भांति पूर्ण होने के लक्ष्य में उन्होंने विश्वभानु की पुत्री तथा अपनी विशिष्ट प्रिय राधा रानी को अन्य गोपियों समेत आमंत्रित किया और उन सब को लेकर नदी में स्नान करने गए। उनकी जल क्रीड़ा अवृत्त स्नान जैसी थी, अर्थात वह औपचारिक स्नान जो किसी वैदिक यज्ञ के पूरा होने के पश्चात किया जाता है। हरे कृष्णा। यहाँ अवभृत स्नान, क्या बोलते हैं इसको? अवभृत स्नान कभी करते? हमेशा एक व्रत पालन करता है, राइट। वो पूर्ति होते हुए क्या करना चाहिए? यह अवभृत स्नान करना चाहिए। इसके बारे में विस्तार से यहाँ लिखा है। They are playing in the water was meant to serve as the avabrata snan, the ceremonial bath taken immediately upon completion of Vedic sacrifice. क्या लिखा है? एक यज्ञ पूर्ति हो गया तो, राइट। ये भी यज्ञ है, भागवत सप्ताह भी यज्ञ है। जैसी सप्ताह पूर्ति होते हुए ये करना चाहिए। जो वक्ता है ना, उनको स्नान कराने का है। कौन? जो हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में स्पॉन्सर्स, वो लोग करना चाहिए, यजमान कराना है। उसको बिठा के उनको सिर पे कलश का अंदर पानी होगा, उसमें से स्नान वान करने का है। उसको पूरी तरह से ये करना वो करना सब कुछ होता है। अवभृत स्नान बोले तो ये। हाँ, श्रील प्रभुपाद ने निम्न प्रकार की टीका की है। भारतीय लड़कियों तथा स्त्रियों में यह पुरानी प्रथा है कि जब वे नदी में स्नान करती है तो अपने सारे वस्त्र तट पर रख देती है और पूरी तरह से नग्न होकर जल में डुबकी लगाती है। नदी के जिस भाग में वे स्नान करती है वहाँ पुरुषों का प्रवेश वर्जित था और यह प्रथा भी चालू है। भगवान ने उन अविवाहित कन्याओं के मन की बात जानते हुए उन्हें वांछित फल दिया। उन्होंने प्रार्थना की थी कि उन्हें कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो। कृष्ण उनकी यह इच्छा पूरी कर देना चाहते हैं। भगवान उनको इच्छा को पूर्ति करने के लिए तैयार है, राइट। उनको मानसिक इच्छा को पूर्ति करने के लिए भगवान स्वयं चले गए।
क्योंकि भगवान देखता है हर एक को जो भक्ति के बारे में, राइट। हम लोग दूसरों को भक्ति के बारे में कमेंट करता है, मगर मालूम नहीं क्या होता है उसका भक्ति। इसलिए हमेशा क्या कहता है, दूसरों को भक्ति के ऊपर हम लोग कभी भी कमेंट नहीं करना, क्या होता अपराध हो जाता है। यहाँ भगवान जानता है ये गोपियों ने इतना श्रद्धा पूर्वक वो ये व्रत रखा है, व्रत के अंदर उन्होंने भगवान को इतना स्मरण किया हो, इसलिए भगवान सोच रहे ये सही समय है उनको कृपा करे, क्योंकि उनको क्या इच्छा था, कृष्ण को प्राप्त करना। लीला ही कर रहे हैं। मगर ये दूसरों जो सुनेगा तो नास्तिक लोग को इसके बारे में समझना मुश्किल है, राइट। आगे श्लोक भगवान तदपि प्रेत्य कृष्णो योगेश्वरेश्वरः वयसै अवृतस्तत्र गतस्तत्कर्म सिद्धये। देखिए कुमारिका लिखा है, कुमारिका मतलब वापस एक बार बोल रहा हूँ, प्राचीन काल में जैसी 5 बरस और 6 बरस, उसमें वो लोगों को मेंटल मेच्योरिटी कंप्लीट किया जाता है। एक बार जयदेव स्वामी महाराज एक्सप्लेन करते थे, these are the girls or special girls, not the normal one what we think in the material world. That's why we cannot see that maturity in our girls, क्योंकि ये तो भगवान के साथ हमेशा उनका धाम में, मतलब गोलोक धाम में सेवा करने वाली है, इसलिए वो क्या करती है, उसी उम्र में बराबर भगवान को पति बनने के लिए इच्छा रखता है। So their mental maturity is so high, they are able to realize what is the future of their coming up. Okay. Okay. ये पढ़ने के लिए ऑनलाइन में तेजस्विनी पढ़ो माँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं शब्दार्थ अनुवाद। भगवान भगवान ततः वह अभिप्रेत्य देखकर कृष्ण श्री कृष्ण योग ईश्वर ईश्वरः योगेश्वरों के भी ईश्वर वयस्ये ही तरुण संगियों द्वारा आवृतः गिरे तत्र वहां गत गए तथा उन कन्याओं के कर्म अनुष्ठान सिद्धये फल के लिए विश्वास दिलाने। अनुवाद। योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान कृष्ण इस बात से अवगत थे कि गोपियां क्या कर रही है, अतएव वे अपने समवयस्क संगियों के साथ गोपियों को उनकी साधना का फल देने गए। तात्पर्य बाय श्रीला प्रभुपाद। जय श्रीला प्रभुपाद। योगेश्वरों के भी ईश्वर होने के कारण भगवान कृष्ण आसानी से गोपियों की इच्छा समझ सकते थे और उनकी पूर्ति भी कर सकते थे। सम्मानित कुटुंबियों की तरुणी की तरह एक तरुण बालक के समक्ष गोपियों का नग्न अवस्था में प्रकट होना अपने प्राण त्यागने की अपेक्षा अधिक लज्जाशील था। फिर भी कृष्ण उन्हें जल से बाहर आने और नमस्कार करने के लिए बाध्य कर दिया। यद्यपि गोपियों के शारीरिक अंग पूर्णतया विकसित थे और कृष्ण उनसे एकांत स्थान में मिले थे तथा उन्हें पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था, किंतु उनके मन में भौतिक इच्छा का लेस भी नहीं था, क्योंकि भगवान पूर्णतया दिव्य है। भगवान कृष्ण दिव्य आनंद के सागर है और वे आध्यात्मिक स्तर पर सामान्य काम भावना से पूर्णतया मुक्त होकर अपने आनंद को बांटना चाह रहे थे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यहाँ कृष्ण के जिन संगियों का उल्लेख हुआ है वे केवल 2-3 वर्ष के नन्हे बच्चे थे। वे एकदम नंगे थे और उन्हें स्त्री तथा पुरुष में अंतर का पता नहीं था। कृष्ण जब गौएं चराने जाते थे तो वे भी उनके पीछे पीछे हो लेते, क्योंकि वे कृष्ण के बिना नहीं रह सकते थे। हरे कृष्णा। तभी ठीक नहीं है, खांसी बहुत है। हाँ नहीं, बस थोड़ा खांसी आ गया था, बाकी ठीक। संभालो, ठीक है। अच्छा, ये श्लोक का हम लोग व्याख्यान देखे, उसके बाद पूजन का रेडी हो जाएगा, राइट? रेडी फॉर पूजन। ओके सॉरी, ओके I am always mixing it, but I speak more of Hindi. That's the problem. Hare Krishna. So in this verse there is a very important thing.
Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, master of all, master of mystics, right? Mystic yoga, right? Ashtanga yoga को क्या कहते हैं? Mystic yoga बोलते हैं. So there may be so many, but who is the super? Krishna is the super, master of mystics. Who was aware of what the gopis were doing? So what I was telling now in the previous sloka, Krishna was aware these gopis or the kumarikas, they are already started performing the vrata only to get Krishna as their husband. So he is the master of mystics. See, I'll tell you. When we talk about the yoga, there are different type of yogas. So there are 8 type of yogas. In one of that, it is explained they will have the power to understand others' mind. They can read their mind. Clear? That means it is a very special gifted power. But what we see in the material world is nothing. Because Krishna is the master of everything. All these yoga mystics come from him. So naturally he knows. So that's why here the explanation given is he understood the minds of the gopis, kumarikas. So he could also fulfill their desire. So the gopis are like young girls and respectable families. Why it is written respectable family? Can anybody say? Why it is written respectable family? Following the cultures. Huh? Following the culture. The gopis, like all young girls from respectable families. What is the next sentence? Considered the embarrassment of appearing naked before a young boy to be worse than giving up their lives. Right? What the common man say, it's not correct. But this is not the rule here. Because it's always explained, every jiva is part and parcel of the Supreme. Right? It is meant to serve the Supreme. So under the circumstances, one should not embarrass and look at it, why they are like this, why the gopis were not dressed. But it's very clearly mentioned, consider the embarrassment, that's the reason it's appearing, it looks for our eyes very odd, because we have got a certain, what to say that, contamination in the mind, right? So that's why you are not able to look at it properly. So here, they are all coming from respectable families. They are not just like anything. Moreover, in the previous purport, Prabhupada is very clearly mentioning, in the villages, generally, the girls will have a separate kund for taking bath. It will not be a common one. Many of you might know, because I don't know how many of. I remember in our hometown or village, wherever I had gone, girls, there will be a separate kund, right? You can call it as pond. Then for men folk, it will be separate. Even in a river, you could have seen it, there will be a barricade. The men folk will take snan separately and the girls will do it. It will be never combined. So here, they were in the type of situation and they were doing it. So, yet Lord Krishna made them come out of the water and bow down to him. Although the bodily forms of gopis were also fully developed, and although Krishna met them in a secluded place and brought them fully under his control, because the Lord is completely transcendental and there was not any trace of material desire in his mind. So the mind of the Lord was very clean. He is not having any material desire, right? He is not affected like us in the material world, right? So what is the sloka? There are so many slokas, right? Though he comes to the material world, the material gunas or the material qualities does not affect him. What is that? Brahma Samhita, Bhāgavatam. Hare Krishna. Anybody else? Online. Hare Krishna. प्रभु क्या कह रहे? Huh? He is not able to remember. Who is Brahma praise? You all must know, no? What is that Brahma praise? That also the same thing comes. The material gunas cannot touch Krishna. Anybody knows? Hare Krishna online. Quick. I'll give a start. Mayahi.
Huh? माया यस्य जगदन्तस्थान सुते त्रैगुण्यत विषय में लिखिताय मानव सत्वावलंबी परसत्वम विशुद्ध सत्वम गोविंदमादि पुरुषम परसत्व विशुद्ध सत्वम, सत्वम उससे बढ़कर शुद्ध सत्वम। यहाँ भगवान के लिए क्या बताया हुआ है? विशुद्ध सत्वम, द टॉप मोस्ट. So then Prabhu was telling something from the again Bhāgavata, which you are going to read it in the 27th chapter. So there Indra is glorifying Krishna. How he is glorifying? Vishuddha sattvam tavadhama shantam tapomayam dvasta rajas tamaskam. Raja tama, everything is knocked off. Then maya mayoyam guna sampravaho. Guna ka pravah आपको कुछ भी नहीं कर सकता. So here also it is mentioned Krishna is above all these material things. Though they came out, did pranam everything, for a normal person who is in the material world, they cannot look at it precisely in the spiritual way. The conception will be wrong. Okay. So one should understand again, when we look at it further, Lord Krishna is the ocean of transcendental bliss, and he wanted to share his bliss with the gopis on the spiritual platform, completely free of ordinary lust. सामान्य काम का जैसे नहीं है. भौतिक जगत में हम लोग जो देखते हैं उसका हिसाब से यहाँ देखना नहीं चाहिए, उसका तुल्य हम लोग को सोचना भी नहीं चाहिए. Okay. Moving on to the Srila Viswanatha Chakravarti Thakur explains that the companions of Krishna mentioned here were toddlers, 2 or 3 year old. क्या लिखा है? Toddler मतलब है छोटा वाला. क्या उम्र है? 2 or 3 years. They were completely naked and were unaware of the difference between the male and the female. कौन लिख रहा है? विश्वनाथ चक्रवर्ती. When Krishna went out to herd the cows, they followed him because they were all so attached to him and they could not bear to be without association. क्या हो? Eight हो गया. हरे कृष्णा. अच्छा माधव, ready for the पूजन? Okay. Keshav Das, you are going to do kirtan very mildly for 10 minutes. Okay. There are some more in the online. They will also get a chance of 5 minutes. You do 10 minutes. Others will do another 10 minutes. Okay. 2 hours. Okay. You start it very mildly. Always you are starting the Hare now. Always Guru Pranam then. Match was ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತಂದ್ರು ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಅದ ಬೆಳಗ್ಗೆ that's perfect. ಫೋರ್ ಮಾಡೋದು ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೊತ್ತರ ಮಾಡೋದು ಕೊಂಚ எடுத்து லூஸ் ஃப்ளவர்ஸ் வேற கலர் இருந்தா எடுத்துறோம் சீக்கிரம் தீமன் துவாவா ஏய் தீமன் திலக்க இல்லடா நெத்தியில
ரைஸ் கொஞ்சம் புளியும் ஒரு சின்ன கப்ல ஹல்தி அரிசி எங்க இருக்க மஞ்சள் பொடி இருக்கு அவ்வளவுதான். அரிசி எடுத்து வச்சு மஞ்சள் பொடி தூள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நானும் கவனிக்கல அவர் எடுத்து வச்சாரு ஒண்ணுதான் மஞ்சள் பொடி இருக்க கூட கஷ்டப்படுறேன்.
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी हरे वहीं कृष्ण। पूजा चल रही है शायद, इसलिए उन लोगों ने बंद कर दिया है। अच्छा अच्छा, ओके। पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। उमेश माता जी। क्या हुआ प्रभु? उमेश उमेश पत्नी किधर है? आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु ठीक से। Hare Krishna. Are you able to hear me? यस प्रभु जी। नाउ यस प्रभु। Okay. I am calling out Umesh wife. Mata ji, you start the kirtan for 5 minutes. टाइम लगेगा, शुरू करेगा तुरंत। ताल नहीं है, कर देते। ओके हाँ, प्रभु ऐसे ही शुरू कर। करताल नहीं है, करताल के बगैर ऐसी गाई है ना, बस 5 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं है। क्विक।
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama, Rama Rama, Hare Hare, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। माता जी चालू रखिए, निर्मला माता जी, जब तक प्रभु आते हैं। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी गा दिया। लेकिन अभी ओके। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा रामा, रामा रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा 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 कृष्णा, हरे हरे,
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।
5 मिनट्स बोला था, 10 मिनट्स के ऊपर हो गया। माता जी आप भी गाओगे, तेजस्विनी माता जी? कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय। प्रभु ने माइक खोला। कमल मुखी माता जी है, सुमति माता जी है। Mataji, I can't do here. Meeting is happening for Prabhu. हरे कृष्णा। हाँ प्रभु आ गए। यस प्रभु जी। क्या मैंने Pura Niranjanam Sandarsayami. You all the three do full namaskar and go and sit there wherever you want. Okay. Now. Okay. Shankar, the connect பண்ணிடுவாங்க நம்மள. அது வயர் தொங்குறது மாதிரி. ரீசார்ஜ் கொடுத்து. இது நமஸ்காரம் பண்ணி முடிக்கிட்டோம். He also do it. He can do it. What is it? Nothing wrong. Mother should be always on your right side. Papa's right side he should be. He can be on your. What do you say? That's okay. Grantha is here. That's it. Okay. So. No. Power. Hare Krishna. So we had a different method here. Today, actually, we start with the puja, then we start the pravachan. Today, we did some pravachan and again with the puja. Hare Krishna. I request all the devotees come closer, please, so that it's easier for everybody. Okay. Who is going to share the screen now? Vidyagati, huh? Okay. So I see lots of new faces also. This is Srimad Bhāgavatam, 10th Canto. We are in the 22nd chapter. So, Hare Krishna, Hare Krishna, Hari Bol. So, 10th Canto, 22nd chapter, Shloka number 9, wherein Krishna steals the dresses of the Kumarikas, gopis. Okay. So we read that previous shlokas. The gopis or the Kumarikas, they are observing a vrata called as Katyayani Vrat. In the Margasirish Mas, we saw in the Tirupavai, Andal Nachar was observing Pavai Nonbu. There are lots of similarities. Moreover, whatever Andal Nachar was doing, it's just following the footsteps of Bhagavatam, following the footsteps of gopis of Vrindavana. So that's why we always, whenever we talk about the Tirupavai, we say following the replica of the Vrindavana. So Shivaliputur is a replica of Vrindavana. So all the things, the whole month they are doing the vrata, they are calling out each and every one, they are singing the glories while going to the river to take a bath, right? Nowadays it's very rare to do all those things, right? Hare Krishna. So in this, now the girls have taken a bath and Krishna is asking them to come out of the water. And when they come out, they are little hesitant because he is a boy, Krishna is a boy, and they are a girl. And they are feeling odd. And the acharyas are explaining Krishna is the supreme personality of Godhead, and he is also the master of mystics. Take it out. Careful. So, in the previous verse, we are looking at it. Vishwanatha Chakravarti Thakur says they are hardly 2-3 years and they are not as we think. In this material world, the related, bodily related things, they are not aware. So they are all Kumarikas. But what is interesting is they are well matured on the spiritual side. How? It's a very good example. We get it from the Bhagavatam, wherein Prahalad Maharaj says, Kaumara Acharya. Kaumara, it says 3rd year onwards, from the age of 3. But nowadays we are telling, oh, after 60 we can. Right? When young children are going to temple, oh, we are going so well. Right? So it's a very bad practice what we have. Bhagavatam explains so wonderfully here. So here all the Kumarikas are very well matured on the spiritual side. This is a very important aspect. Again, I will repeat that because the thought should be very clear. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur says that the companions of Krishna mentioned here were
mere toddlers, 2 or 3 years old. They were completely naked, but unaware of the difference between a male and a female. So they had a samadarshina. They can see only the soul, not the external body. But for us, the moment we say, oh, you are a fair guy, you are a dark guy. So our complete vision is wrong. So we can understand this. So let's move on to the shloka number 9. Tasham vashamsi upadhaya nipam aruhya satvaraha asadbihi prahasan bhalaihi parihasam. Listen carefully. Parihasam. Joking. Parihasam uvachaha. Okay. भावना माता जी, कैन यू? भावना माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी इंग्लिश में पढ़ो। हाँ, वही दिखा रहे हो। The sum of those girls, Vashamshi the garments, Upadaya taking, Nipam a Kadamba tree, Ahruya climbing, Satvaraha quickly, Hasadbhihi who were laughing, Prahasan himself laughing loudly, Balai with the boys, Parihasam joking words, Uvachaha he spoke. Translation by disciples of Srila Prabhupada ki jai. Taking the girl's garments, he quickly climbed to the top of a Kadamba tree. Then, as he laughed loudly and his companions also laughed, he addressed the girls jokingly. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Taking the girl's garments, he quickly climbed on to the top of the Kadamba tree. Then he laughed loudly, and his companions also laughed. He addressed the girls jokingly. So Krishna, with that dresses, he climbed up. And what is the thing? Here, he is trying to check their dedication towards Krishna. But for a common man, they will look at it in a different materialistic way. So one should be very clear on this. Okay. So moving on to the next one. प्रभु कदम्ब ट्री यहाँ पे भी था, मीन्स पूरे वृंदावन में था या सेम ये अलग डिफरेंट? कदम ट्री कदम्ब वही है। अच्छा, ये लीला तो वृंदावन में हो रहा है ना। अत्र गत्या भाला बलाः कामं स्वं स्वं वासः प्रगृह्यतां सत्यं ब्रवाणि नो नर्म यद्यूयं वृतः कर्षिताः। ओके, अच्युता, synonyms, translation, everything. Louder. Synonyms: Atra, here; Agatya, coming; Havala, O girls; Kamam, as you wish; Swam, each your own; Vasaha, clothing; Pragyatham, please take; Satyam, the truth; Bruvani, I'm speaking now, not you, rather; rather; Narma, just; Yat, because; you, Vrata, by your vow of austerity; Karsitam, fatigued. Translation by His Divine Grace, Now Krishna said, my dear girls, you may each come here as your wish and take back your garments. I'm telling you the truth and I'm not joking with you. Since I see your fatigued from executing your austere vows. Hare Krishna. My dear girls, you may each come here as you wish. Why it is written as you wish? What is the wish of the Kumarikas? Many of might not have heard it before, because in the previous sloka it all came. What it was telling? They had a wish. What is that wish? They wanted to
have Krishna as their husband. So that means it's very clear that thought process is so clear and their goal is also very clear. Because if you look at it, what is the purpose of human life? Goloka, right? So Goloka means after going there, what is the next one? Right? Serving Krishna. That means he is the only Purusha. He's also called as what? Purna Purushottama. Right? We all jivas are all females. But we have a body of a man and a woman. But all are jivas. So this is the philosophy here. And Krishna is telling, you all come up and take your garments. And what the wishes of the Kumarikas, they want to have Krishna as their husband. It's very simple. I am telling you the truth and I am not joking with you. Since I see your fatigue from executing austere vrata. What is written here? Austere vrata. That means they had been observing the vrata. After observing vrata, what happens to your body? After Ekadashi day. At the end of the Ekadashi, what happens to you? Tired. Right? Is it correct to become tired? Huh? Tell me how you should be at the end of the Ekadashi day. Huh? 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 Now, how the mood should be? Tired. Body wise tired, soul wise you are energized. Both are wrong. It's very simple. You should be always joyful, right? See, whenever you perform austerity, the mood, what is the mood should be? Joyful. Where it is said there? Ananda Buddhivardhana. No. You have to perform this joyfully. Quick. It should not take so long time. Hare Krishna, online, the question comes. Sadanavadas. Boliye, pura shlok. Susukam. Sukam means joyful. And what is here? Susukam means blissful. That's very important. So you have to be doing it with joy. Oh, today Ekadashi. Then after some time, oh, tomorrow nice idli, pongal, chutney, vada. Right? See, this is what. Why I am talking this. Try to understand. Fatigue should not be there on a vrata day, mentally or physically, because you are executing something for the pressure of the Lord at the cost of your energy. Energy comes from the Lord, right? The energy is spent for him. Nothing wrong in it, right? So here also, Krishna says, I know you are all fatigued because they observed the vrata for how many days? Louder. Who said that? Somebody said that. Huh? 1 month, right? So Margashish month, how we are doing it? 1 full month, we are waking up for the Mangalarti, right? Similarly. So here also, they are observing the vrata so strong. Okay. So moving on to the next sloka. See, certain things we have to understand in a simple way. It's not complicated. It's a clear way, right? The next one. Na mayodita purvam va anrutam tadime viduhu ekai kashaha prati chadvam sahayveti su madhyamaha. Okay. Okay. Prabhu, what's your name, please? Yeah. Gopi. Oh, wonderful name. Then you have to read this. Look at the screen and read it. Somebody can give him a mobile so that he can follow it. Leave it. Synonyms and translation, both. Quick. We have to be a little faster because we have to cover so many shlokas. No, not shloka. Oh. Vidyagati. Hare Krishna. Dear devotees, the procedure is very simple. I will read the shloka. You all have to read the synonyms and the translation. Because Madhu requested me to speak more in English. I am speaking more in English. Okay? Hare Krishna. Na, never,
Maya Vaini Udita spoken Purvam previously, why definitely Agdam anything false that Imi these young boys Vidu no Ekaksha one by one Pachi Pratichatavam pick out Saha or all together Iva indeed iti thus so Madhya Maha. I think I would suggest if you all sit here, you can look at the screen more easily. All of you move this side a little more. Or turn like this toward the screen. Yeah. Because his neck will pain a little later. Yeah. Translation by Srila Prabhupada. I have never before spoken in light, and those boys know it. Therefore, O slender waisted girls, please come forward. Never run by one or all together and pick out your clothes. So, Krishna is speaking the truth. We all have to accept it. How to accept it? Right? How to accept Krishna speaks always the truth. What are the evidences? Guru Sadhu. Krishna always speaks the truth. Right? What are the references? Huh? बोलो. इतना याद है वो बोल. You remember Satyavratam, Satyaparam, Sri Satyam, right? Okay. Many of you have forgotten. This is a Brahma prayer. It is coming in the 10th canto. We have already crossed that. It is in the 3rd chapter, sloka number 20, if I remember right. Okay. So, again, if you look at the very first sloka of Bhāgavatam, which is called as Vedanta Sutra, right? Satyam Param Dhimahi. So one can understand easily, the Lord is embodiment of Satya. There cannot be anything lying. Okay. So he always speaks the truth and everything is truth. So here he is telling the girls, I am speaking the truth. I never lie. And he is taking witness for all the boys. So the girls have to believe it. I tell you, the whole world, what we are around, okay, how it functions, what is the basic thing which is required for our life to move on? Truthfully. Say correct. I used the word in between. Nobody noticed. Satya. No. Faith. Because Krishna said, I will not lie. Then what is our role? To believe it. As it is. To have faith. Including the basic thing. The spiritual things, what we hear is based on what? Faith. Because there are sadhu, shastra, guru. And what they say is always truth. How? Because they have seen the truth. That's why Satyam Param Dhimahi. So हाँ यहाँ यही बताया हुआ है. भगवान क्या बता रहे? मैं कभी भी झूठ बोलने वाला ही है. ये बच्चों को मालूम है. आगे क्या बताता है? आप आगे एक एक करके आ जाओ, नहीं तो ये सब मिलकर आ जाओ, अपना अपना वस्त्र ले जाओ. Okay, moving on to that. 12. Tasya tat shivelitam drishtva gopyah prema pariplutaha vriditaha prekshya chanyonyam jata hasa na niryayuhu. Okay. There are devotees online also. I have to request them to read it. Okay. Padma Jayashankar Mataji. Synonym translate quick. Hare Krishna Prabhuji, Dandat Pranam. Tasya, his, that, Kesvalitam, joking behavior, Dristva, seeing, Gopyaha, the gopis, Prema Pariplutaha, fully immersed in pure love of Godhead, Vriditaha, embarrassed, Prekshaya, glancing, Cha, and
anyonyam upon one another. Jata khasah, beginning to laugh. Na nirayuha, they did not come out. Niryayuhu. Niryayuhu, they did not come out. Translation by Srila Prabhupada's disciples, Jai Srila Prabhupada. Seeing how Krishna was joking with them, the gopis became fully immersed in love for him. And as they glanced at each other, they began to laugh and joke among themselves, even in their embarrassment. But still, they did not come out of the water. Hare Krishna. Perfect. 1 minute, Prabhu. Purport, I request somebody else. Hare Krishna. Umesh Mataji. हरे कृष्ण प्रभु। हाँ। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री प्रभुपाद। तात्पर्य, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की है। गोपियां अत्यंत सम्मानीय परिवार की थी, अतः उन्होंने कृष्ण से तर्क किया होगा, आप हमारे वस्त्र को नदी के तट पर छोड़कर क्यों नहीं चले जाते। तब कृष्ण ने उत्तर दिया होगा, लेकिन तुम तो अनेक हो, अतः तुम में से कुछ लड़कियां अन्य लड़कियों के वस्त्र ले सकती हैं। गोपियों ने उत्तर दिया होगा, हम ईमानदार हैं और कभी कोई चीज नहीं चुराती, हम पराये की संपत्ति को छूती तक नहीं। तब कृष्ण ने कहा होगा, यदि ऐसा है तो बाहर आकर अपने कपड़े ले लो, इनमें कौन सी कठिनाई है। जब गोपियों ने कृष्ण के संकल्प को देखा तो वे प्रेम पूरी आनंद से भर गईं। यद्यपि वे सच्चाई थी, किंतु कृष्ण का ऐसा आकर्षण देखकर अत्यंत हर्षित थी। कृष्ण उनसे इस तरह परिहास कर रहे थे मानो वे उनकी पत्नियां या प्रेमिकाएं हों, और गोपियां तो बस यही चाहती थीं, किंतु वे सच्चाई थी कि वे उन्हें नग्न देखे जा रहे थे, किंतु तो भी वे उनके परिहास युक्त शब्दों पर अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी और वे भी परस्पर मजाक करने लगी। एक गोपी ने दूसरे से निवेदन किया, आगे जाओ, तुम सबसे पहले जाओ और हमें देखने दो कि कृष्ण तुम्हारे साथ क्या कोई चाल चलते हैं, तब फिर हम भी जाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू। चाल चलने वाले में श्रेष्ठ है, राइट? वो चतुर भी है, चाल में भी श्रेष्ठ है। यहाँ इन दो अन्योन्य श्लोक में क्या शब्द उपयोग? अन्योन्य, चान्योन्य, मतलब एक और दूसरे से बात करती है। हर एक को तो इसी समय पे अपना हृदय में क्या इच्छा है, वापस भूल गया, कृष्ण पति बनाना, राइट? इच्छा वही है, मगर फिर भी कृष्ण आके ऐसी कपड़ा ले गया, मगर इन लोगों को आगे भी कुछ न कुछ संकोच है। इसके बारे में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अच्छा बताते हैं, उन दोनों के बीच में क्या क्या बात किया होगा, उनका मनोभाव कैसे होगा, उसके बारे में बताते हैं। The gopis were most respectable family. सबसे पहला, ये कुमारी का साधारण व्यक्ति नहीं है, इतना अच्छा उच्च कुल से आया हुआ। आगे क्या लिखता है? Might have argued with Krishna like this. Why don't you simply leave the clothes on the bank on the river and go away? क्या बोल रहे हैं? आप कपड़ा छोड़ के यहाँ से जाओ, हम लोग ले। आगे उन्होंने क्या बताएगा? आप लोग गलती से दूसरा का कपड़ा ले जाएंगे। देखो, ये चाल का बात है, राइट? सो चतुर बोलेगा तो ऐसे होना चाहिए। आगे उन्होंने गोपियों ने क्या बताता है? वी आर हॉनेस्ट, वी नेवर स्टील अदर्स, वी नेवर टच अदर्स प्रॉपर्टी, राइट? ये संवाद बिल्कुल ठीक है। आगे देखिएगा तो वापस कृष्णा क्या बोलेगा? इफ दैट इज ट्रू देन सिंपली कम एंड गेट योर क्लोथ्स, व्हाट इज द डिफिकल्टी? क्योंकि ये चतुर बोलेगा तो क्या है, जो हम लोग संवाद होता है ना, उसमें दूसरों को कॉर्नर करना है, आगे कुछ बोल नहीं पाएगा, ऐसे ही करना चाहिए। सो कृष्णा इज मेकिंग देम, दे कैन नॉट गिव आंसर, he is cornering them and winning them in the talks, right? Even in the companies or any deal, when you sit in the meeting, what do you do, right? Negotiation. What is the meaning of negotiation? Trying to convince each other, right? But in the material world, it's a different thing. I don't want to say more. It's a type of cheating. But here, it is not the case. Here, Krishna is winning their heart. Already they have
surrendered the heart to him. But still, there is a why, I tell you. The reason is, see, between a boy and a girl, the understanding is always very strong in the material world. But of late, it is coming down for various reasons. Let us not get into that. But here, Krishna is a boy, and the girls are also Kumarika, it's written. Automatically, when they have the attraction for each other, what they do, they try to first attract the other. It's always there, winning over. So here, though Krishna has won their hearts, but when Krishna comes in front, they are not ready to give up. Similarly, Krishna, when he's doing that, the girls are also thinking, how we can give it up? Let us hold it up. In this regard, I will tell you one interesting thing. I do not know how many of you know this. There is a proper way of vivaha. The vivaha, there is a portion of the vivaha. It says the boy and the girl will have a games. Maybe South Indian may know that. After the vivaha is everything is over, they will have certain things and the games will start. At that time, the girl side, everybody will be telling, don't give up. And the boy said, oh, don't give up. Poor boy and the girl will be having a game. Who will win the game like that? And most of the time, what is interesting is, the boy will give up for the pleasure of. But unfortunately, I don't know the comment. Hare Krishna. So fortunately. Okay, so here also, Krishna is doing the same thing. Already he has won their hearts, but they are not ready to give up. So Krishna makes them. See, I tell you, this is another way of complete surrender. Because if you look at the previous verses, wherein it says, they observed the Vrita in full. And their mind were completely absorbed in Krishna. So under the circumstances, the purport also, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur very clearly mentions, they are very clear, they have chosen Krishna as their husband. So here also, when the Lord comes in front, they are not ready to do that. So that's what it happens. So further what happens? When the gopis saw Krishna's determination, see the word here, Krishna's determination, they were filled with loving ecstasy. Why? Because they are all very happy Krishna is after them. This is quite natural thing, okay? They were overjoyed to receive such attention from Krishna. That means Krishna is giving more attention to them. Right? So that means if he turns back and don't turn at her, what will be the feeling of a girl? Oh, he's not minding me. He's not loving me. When he's giving such attention, internally they are very happy. Clear? That's what is mentioned here. So Vishwanath Chakravarti Thakur, what does he say? He was joking with them as if they were his wives or girlfriends, and the gopis' only desire was achieve such a relationship with him. So that desire was very clear. That's why here it is explained, he is making some jokes. And what does it say? It's clearly means as if they were his wives and girlfriends. Then further, here it is explained, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, what does he say? At the same time, they were embarrassed to be seen naked by him. So this is also a quality of a woman. What is that quality? Shyness. So this shy is natural tendency of a woman. Especially, what we have heard in the first line, they come from a most respectable family. उच्च कुल से उन्होंने आया हुआ है, इसलिए उन लोगों के अंदर क्या है? एक शर्म आती है. ये तो स्वाभाविक है. स्त्री का हमेशा इसी होती है, right? So that's what here. See, whenever this Vishwanath Chakravarti Thakur gives an explanation, it will be very precise, shastric. That's why Prabhupada takes all these wonderful explanations. But still they could not help laughing at his joking words. Because internally they like him and they are ready to enjoy the jokes what he cracked. And even began to joke among themselves.
So that means they are joyfully accepting Krishna and they have already given up everything to Krishna. This situation, they are little hesitant because of the natural shyness. Okay. One gopi urging another, go ahead, you go first and let's see Krishna's place and tricks on you. They will go later. So that means they are trying to make others go and they want to watch. Okay, so this is a wonderful thing. Moving on to the next one. Evam bruvati govinde narma nakshipta chetasaha akankta akanta magnaha shitodhe vepamanastam abruvan. Okay. Yes. Louder. Evam thus Gurti speaking Gauravande Lord Govinda Narmana by his joking words Akshata agitated Sheta Chetasaha their minds up their necks Magnaha somewhat Sita cold Uda under the water whip Mataha shivering them to him Abravam they spoke. Translation and perfect by It's divine grace. No, it's just continue that, no need. Okay. Just to say disciples of Srila Prabhupada. That's it. Read the translation. As Sri Govinda spoke to the gopis in the stage, his joking words completely captivated their minds. Submerged up to their necks in cold water, they began to shiver. Thus, they addressed him as follows. Okay. What's your name, my dear? Praneet. Praneet. Yeah. Can you read the further purport on that? Yeah. Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada ki Jai. Srila Vishwanath Chakravarti Thakura gives the following example of joking between Krishna and the gopis. Krishna, O bird-like girls, if you do not come here, then with these garments caught in the branches, I will need to swing and a hammer. I need to lie down, since I have spent the entire night awake and I am now becoming sleepy. Gopis, our dear cowherd boy, your cows, greedy for grass, have gone into a cave. So you must quickly go there to herd them back on the proper path. Krishna, come now, my dear cowherd girls. You must quickly go from here to Braja and perform your household duties. Don't become a disturbance to your parents and other elders. Gopis, our dear Krishna, we will not go home for an entire month, for it is by the order of our parents and our elder and other elders that we are executing this vow of fasting, the Katyayani Vrata. Krishna, my dear austere ladies, I too, by the strength of seeing you, have now developed a surprising mood of detachment from family life. I wish to stay here from a month and execute the vow of dwelling in the clouds. And if you show mercy to me, I can come down from here and observe the vow of fasting in your company. The gopis were completely captivated by Krishna's joking words, but out of shyness, they submerged themselves in the water up to their necks. Shaking from the cold, they addressed Krishna as follows. So here the conversation, it's in English, so everybody can understand very easily. See, the final word, which is the bottom line of this entire translation is, so Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, what does he say now? Out of shyness. What is that? Out of shyness, they are not willing to come out. Internally, the mind is always fixed in Krishna. Because what is Krishna consciousness? The Chetana, the consciousness should be fixed in Krishna. That's what we are struggling for so many years, right? Certain are able to achieve it, certain are not able to achieve it. But here the gopis or the kumarikas, they were able to achieve it very easily. But when the Lord is right in present, still they are having their own shyness.
but internally they are always towards Krishna. So here, what Krishna says at the end is very funny thing. Huh? He says, I also want to observe the vrata, to detach from the family life. Only Krishna can speak. I'll tell you, it's a true thing. Many of you cannot understand why this Acharya has written like this. When we read the Ashtotram, no, it is written, Om Anadi Brahmacharine Namaha. Anadi means forever he is a Brahmachari. Can you believe it? How many of you agree on this? Oh, right? Very simple. He's a Brahmachari. How? It's as simple as that. Because he is unattached to anything. Though for the Katha we are listening, he has got 16,108. But nowhere he said, oh, I will go and marry. I want to marry. He never uttered anywhere. That's why he making jokes at Rukmini Devi also. What does he say? No, I come from a cowherd. You're a kingly person, a royal person. Then she started crying like that. Then Krishna says, I joke with you. That means Krishna is always having lots of exchange of love with all these wonderful souls. That is understanding. Here also he says, I am going to maintain a detachment. As if he does not have detachment, right? भगवान क्यों नाम दिया उनको? 6 प्रकार का ऐश्वर्य संपूर्ण है. उसमें ये क्या है? त्याग और वैराग्य. So when it comes to renunciation, he is the topmost. How? Quick. Why it is said? He is the topmost vairagya. How? Because he's beyond the 3 modes of nature. Huh? He's beyond the 3 modes of nature. Okay, that's one. Anything else? Make it straight. He is not attached, Prabhu. Huh? He is not attached to anything. That's okay, but how? Give an example for that. Like he became the Sarthi of Arjuna, although he is a Dwarkadish. Okay, one minute. Here, Jagan Mataji is telling something. Okay, that's one thing. We can go on adding this. But one single thing. Because when he saw so many, I tell you, if you look at it, he's the topmost Purusha, right? I am not telling. A Christian from the Kerala, he is telling who is the Nayak and who is Super Nayak. He is analyzing each and every one. He is taking care of, he is considering Jesus and so many. And finally he says, Krishna is the one who could do this. Though he was eligible for the king of Mathura, king of Dwaraka, at no time he took the throne. And similarly, even Hastinapur also, Krishna only did everything. But what did he do? He took Yudhishthira and placed him on the throne. These are all the examples we can give it. But one simple thing we can give it is very easy to cover all these points. What is that? He created the entire world, right? Who it is belonging to who? Krishna. What is the sloka? It belongs to, that word has to come. Ishavasyam. Right? So everything belongs to him, right? But what we think, oh, I have 2 cars. I have got 4 apartments. We say that, right? But he has created everything and he has given everything for us to enjoy, right? That is the topmost. Correct or not? Is it clear for all of you? So he is the topmost renunciant because of it. So here also one can understand he can give up everything so easily, not one. There are so many things. This is a summary. Okay, moving on to sloka. Prabhu, why is changing? So finally, the gopis are completely captivated. This is a word, captivating. See, I tell you, certain persons will be endowed with the captivating talks. It may be a material talk or a spiritual talk. But here, Krishna speaks about the truth. And naturally, the gopis or the kumarikas are attracted because of so many things. Not only the words, not only other things. There are so many elements which make them completely captivated with Krishna. So his beauty and so on. Everything is always attractive, right?
So here also, Krishna was joking so much and they were always captivated. But out of shyness, they submerged water into the water. Okay, up to their neck. Okay, so moving on to shloka number 14. Manayambho kritasthvam tu nandagopa sutam priyam janino nga braja slagyam dehi vasam si vepitaha. Okay, I will request somebody. Pradeep Jaswani, quickly read it. Hare Krishna, Prabhuji. Yeah. Synonyms, translation, and the purport by the disciples of Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Ma, do not. Anayam, injustice. Hoha, our dear Krishna. Krithaha, do. Swam, you. Tu. On the other hand, Nandagopa of Maharaj Nanda. Sutam, the son. Priyam, loved. Janimaha, we know. Anga, O dear one. Braj Shlaghyam, renowned throughout Braja. Dehi, please give. Vasamsi, our garments. Vepitaha, to us who are shivering. Translation. The gopis said, Dear Krishna, don't be unfair. We know that you are the respectable son of Nanda and that you are honored by everyone in Braja. You are also very dear to us. Please give us back our clothes. We are shivering in the cold water. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. ऑनलाइन में एक माता जी है, वो हिंदी में थोड़ा बोलने के लिए बोलती है. मैं थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हिंदी बोलूंगा, चलेगा? हमारा शुरुआत से ऐसे ही होता है. प्रभु ने रिक्वेस्ट किया ज्यादा इंग्लिश बात करो करके, मैं ज्यादा इंग्लिश में चला गया. एक माता जी रिक्वेस्ट करी. ओके, अभी जो सिद्धांत हम लोग देखता था पहला, क्या करने में समर्थ भगवान श्री कृष्ण, इसलिए उनका नाम है भगवान. 6 प्रकार का ऐश्वर्य संपूर्ण है, उसमें एक है, उसमें त्याग है. सब कुछ उन्होंने त्याग किया है. बोलेगा तो एक एक करके आप लोग बताते हैं. जैसे ही वो सिंहासन मथुरा का छोड़ दिया पापा के लिए, सॉरी ताश्री के लिए छोड़ दिया, और द्वारका सिंहासन पिताश्री के लिए छोड़ दिया, और हस्तिनापुर का सिंहासन युधिष्ठिर के लिए छोड़ दिया. 3 जगह पे उनको राजा बन सकता था, मतलब सिंहासन में बैठने के लिए संपूर्णतया योग्यता सब कुछ उन्हीं का है, फिर भी इनके लिए तो छोड़ दिया. मगर सबसे बड़ा उन्होंने क्या किया है, मतलब क्या है, जगत को सृजन करके जो भी काम वासना का साथ जीवा है उसको भोग करने के लिए उन्होंने सब कुछ प्रदान किया है. मगर हम लोग कैसी प्राप्त होने के बाद क्या सोचता है, ये मेरा है. मगर भगवान को देने के लिए बहुत मन आता ही नहीं. राइट, अगर कुछ दिया होगा तो 10 को जाके बताता है मैंने भगवान को विशेष एप्पल लाके अर्पित किया है. राइट, बोलता नहीं बोलता है. राइट, कोई क्या ऐसे होता है, कोई क्या करता है, हमेशा मैं बोलता है ना, ट्यूबलाइट मंदिर के लिए देगा, उसके ऊपर नाम लिख देगा, बिल्कुल रोशनी नहीं है, ऐसे ही होता है. मगर ये तो कुछ भी नहीं है. भगवान आपसे मांगने के लिए नहीं है, क्योंकि वो तो सब कुछ उन्हीं का है. राइट, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, पूर्णमतः पूर्णमिदम्. इसके अलावा और भी उनका नाम है, वो क्या है, आपसे मांगने के लिए कुछ है ही नहीं है उनका. वेरी गुड. तो आत्मारामा संतुष्ट है हमेशा के लिए. हम लोग जो लाके उनको अर्पित करता, क्यों, हमारा कर्तव्य है. हम लोग क्या बनना चाहिए, हाँ, कृतज्ञ. क्या बोलते हैं, कृतज्ञ. कृतज्ञ बोलेगा तो धन्यवाद बोलने के लिए सब कुछ तैयारी होना चाहिए. हम लोग थैंक्स बोलने के लिए संपूर्ण तैयार. अभी हम लोगों को कुछ प्राप्त हो गया ये भौतिक जगत में. राइट, हम लोग क्या करना चाहिए, भगवान के जाके ये पहला बोलना चाहिए, आप बात करो थोड़ा सा. तो यहाँ वो पिछला श्लोक में हम जो देखा था, त्याग करने में संपूर्णतया समर्थ भगवान श्री कृष्ण के पास. अभी देखिए, कोई आके उनसे इतना प्रार्थना करता है. राइट, भगवान क्या बोलता है, आपको जो चाहिए मांगो. राइट, मांगो बोलेगा तो हम लोग मांगता है, जैसी सुपरमार्केट जाएगा तो लिस्ट बनाता ना, वैसे लिस्ट बना के जाएगा. राइट, मगर भगवान सब कुछ देने वाला है. एक श्लोक में उन्होंने बताया था, मुझको मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं. मैं तैयार हूं मतलब
मैं समर्थ हूं, इसलिए उनका नाम है। वरदान देने में समर्थ है सबको, वरदराज। इससे बढ़कर और कोई त्याग करने वाला होगा क्या? बच्चों को 2 पेंसिल मिल गया तो दो ना मेरा है, कुछ नहीं दूंगा, बोलती है नहीं बोलती? So this is what the Krishna's super quality is, renunciation, right? Okay, आज next श्लोक में हम जाएंगे, श्लोका number 14 है. Somebody remind me because I am explaining sometime going back. No, my dear, I have not explained the 14. No. I explained for that Mataji the previous conversation. Now I have to get into 14. Okay, go to the translation. The gopi said, "Dear Krishna, don't be unfair." देखिए गोपियों ने क्या कहता है, आप जो कर रहे हैं अन्याय। भगवान किसी के ऊपर अन्याय करने वाला है? क्या करने वाला हमारे ऊपर? Hare Krishna, quick, we have to have some interaction, huh? Then only you will relish it. Huh? कृपा और मर्सी, ओके। हमारा भलाई के लिए करता है? करता है नहीं करता है? सब लोग बोलता नहीं। जो भी हमारा कल्याण के लिए करने वाला है, राइट? ऐसी विषय में वो उसको कैसे बोल सकता है अन्याय कर रहे? यहाँ क्या कहती हो? डोंट बी अनफेयर। क्या गोपियों ने बताता है, डियर कृष्णा, डोंट बी अनफेयर, वी नो दैट यू आर ए रेस्पेक्टेबल सन ऑफ नंदा एंड दैट यू आर ऑनर्ड फॉर एवरीवन इन ब्रजा। आप इतना उच्च कुल में आया हुआ है, आप ऐसे मत करो, अन्याय मत करो, राइट? यू आर वेरी डियर टू अस। आगे ये भी बोलती है। देखिए क्या हुआ, अभी ये गोपियों ने सब हार गया, पक्का है, इसमें संदेह नहीं है, राइट? मगर हारने के बाद उसको जीतने के लिए और एक तरीका है, वो क्या है? आजकल मटेरियल वर्ल्ड में जो वर्ड है वो बताओ। कौन बोला? कौन? हाँ, ओके, बराबर बताता। क्या है? बटरिंग बोलते हैं ना आप लोग। मधुर यहाँ ये देखिए, नहीं प्रभु, हरे कृष्णा, हर एक सेंटेंस तो इम्पोर्टेंट है। पहला ऐसे ही बोल दिया अन्याय, उसके बाद क्या बोलता है? यू आर ऑल्सो वेरी डियर टू अस। आगे क्या कहते हैं? प्लीज गिव अस बैक आवर क्लोथ्स, वी आर शिवरिंग इन द कोल्ड वाटर। Okay, moving on to shloka number 15. Shama Sundara te Dasya. This Prabhu's name is Shama Chandra. Shama Chandra, huh? Okay. Shama Sundara te Dasya Karavama Tavoditam Dehi Vasamsi Dharmagnya Noched Rajne Bruvama He. Okay, ये पढ़ने के लिए हाँ नया भक्त को देना ही पड़ेगा। हाँ, माता जी जो बेटी आपको पीछे, हाँ बीच में बेटी है ना, वो माता, हाँ आप पढ़िए। नया भक्त लोग थोड़ा हाथ उठाइए, आप लोगों को मौका मिलेगा पढ़ने के लिए। ओके, ये नया है, ये भी नया। हाँ, हरे कृष्णा, पिक। हाँ, Karavama. Ruvamaha. We are your paid servants and must do whatever you say, but give us back our clothing. You know what your religious principles are. And if you don't give us our clothes, we will have to tell the king, please. देखिए हम लोग बोलते ना साम दान धन। देखिए एक ही श्लोक के अंदर इतना उसका देख
क्या बोला था उन्होंने? आप अन्याय कर रहे, बाद में क्या बोल रहे? यू आर डियर टू अस। दो शब्द यहाँ क्या बता रही है? वी आर योर मेड सर्वेंट, मतलब मैं आपका दासी हूं, राइट? आगे क्या कहती है? प्लीज गिव अस। आगे क्या कहती है? आप जो कर रहे हैं ये तो शास्त्रीय नहीं है। अगर शास्त्रीय नहीं है तो हम क्या करना पड़ेगा? राजा को जाके कंप्लेन करना। सो वील गो एंड टेल द किंग। ओके, वासांसी, क्विक। ओके, पाठशाला के जैसे सब लोग बोल दिया। हरे कृष्णा। श्लोका नंबर, अभी भगवान बोलने वाला है, ध्यान पूर्वक सुनिए यहाँ भगवान कैसे उनको डील कर रहे हैं। ओके, श्री भगवान उवाच भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तं वा करिष्यत अत्र गत्य स्व वासांसि पृच्छत शुचि स्मिताः नो चेन्नाहं प्रदास्ये किं क्रुद्धो राजा करिष्यति। Okay, I'll give someone in the online also. I have to keep them busy. Okay, now I have to call quick. Rasavati Mataji, पढ़िए quick. With the children very busy. Hare Krishna Prabhu. Yeah, synonyms. One second, Prabhu. Shri Bhagavan Uvacha. The Supreme Personality of Godhead said, Bhavatyaha, you, Yadi, if, me, my, Dasyaha, servants, Maya, by me, Uktum, one second, Prabhu, it's quite small. That's fine. Uktam, what has been spoken, va, or Karishyata, you will do. Atra, here. Agatya, coming. Swa Vasamsi, your own garments. 1 minute, Radu. Pratik Chata, pick out. Suchi, fresh. Smitaha, who smiles. Na'u. Not. Chet, if na. No, not whom I. Pradasya will give. Kim, what? Kruddaha, angry. Raja, the king. Karishyati, will be able to do. Thank you. Smita Mataji, can you read the translation? Hare Krishna Prabhu. Yeah. Translation by Disciples of Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. The Supreme Personality of Godhead said, if you girls are actually my maidservants, and if you will really do what I say, then come here with your innocent smiles and let each girl pick out her clothes. If you don't do what I say, I won't give them back to you. And even if the king becomes angry, what can he do? Okay. Read the purport also. Purport. Srila Prabhupada comments, when the gopis saw that Krishna was strong and determined, they had no alternative but to abide by his order. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. देखिए, वो लोग एक शब्द उपयोग किया है पिछला श्लोक में, क्या है? हम आपका दासी हूं, उसको पकड़ लिया, उधर से भगवान अभी शुरू करता है. So what he says, you said you are all my maid servant, do what I say, right? That's what in the office happens, right? Boss says do what I say, right? So here also Krishna speaks of that. So it's copied from Krishna. Try to understand the boss. So here what does he say further? If you don't, this is what
that determination with the Lord, when they saw that, they felt it, there is no other alternative, no other alternative, no other alternative but to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So for us also, there is no other alternative but to chant the holy name. Correct? So here also Krishna says, go and complain. And what does he say now? What he can do. This is the authoritative stuff. I'll tell you, one has to understand. If I remember right, nowhere Krishna talks about his supremacy, directly or indirectly in any of the Leelas. But here only, he says what he can do. What can he do? Right? So wonderful. That's why Prabhupada writes here, Krishna was very strong and determined. See, मन तो क्या होता है, कभी भी वो इतना स्ट्रांग नहीं रहता है, विचलित होता है, राइट? कुछ भी सब्जेक्ट हम बात करेगा, हमारा पॉइंट्स थोड़ा वीक होगा तो हम लोग क्या हो जाता है और विचलित होता है। यहाँ गोपियों का ऐसी परिस्थिति हो गया, वो जो बात करती थी, कोशिश करती थी, उनको जीत नहीं पाया। फिर क्या किया? अपना क्या किया? शरणागति किया। कैसे शरणागति किया? मैं आपका दासी हूं, हो गया। भगवान वहां से पकड़ के उनको बोल दिया, अभी तो आप मैं जो कहने वाले वो करना ही चाहिए। So there is no other option. See, this is a wonderful way of submitting ourselves. To whom? अंदर से बोलते, गुरु गुरु कौन बोला? हाँ, जोर से बोलने का दिल। Guru, right? What we have to do? The same thing. Supplication to Guru is more important than Krishna. Why I said that blank? This is reason. So यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि भगवान ने निश्चित करके बोल दिया, इनका मन में मैं हूं, वो कोई भी आके टच नहीं कर सकते। सीधा उन्होंने बोल दिया, मेरा आज्ञा को पालन करो, हो गया। राइट? दीक्षा में क्या बोलता है? क्या बोलते गुरु ने? क्या पूछता आपसे? Will you assist me? Correct? That means what? It's an agnya. So this is also a agnya by Krishna, and they have to fulfill it. Tato jala shayat sarva dharikaha sita vepitaha panibhyam yonim achadya proteruhu sita karshitaha proteru. Proter. It is twice there. Proteru shita karshitaha. Okay. Here. That matter, yeah. Vepitaha. Shivering from the cold, with their hands, yoni, their public area, acharya, covering, they gave him, Sita Karisya, painted by the cold. Translation. Then shivering from the painful cold, all the emperors rose up from the water, covering their public area with their hands. One minute, Mataji. Got some more devotees here. Oh, that devotee is. Rupeshwar Prabhu. Hare Krishna. He's not coming. Okay. Simi Mataji. Hare Krishna Prabhu. Purport. Purport by disciples of Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. The gopis had assured Krishna that they were his eternal servants and would do whatever he said. And thus they were now defeated by their own words. If they delayed any longer... Right? What did it say? This is what Chal. When we talk, we have to be attentively. Prabhupada always say, listen. What does he say? What does he say? There is a word.
Sit properly. That's other word. What is the word he says? Listen carefully. Right? भगवान गीता में क्या कहता है? सुनो. यहाँ भगवान ठीक से सुन लिया है, पकड़ लिया. So Prabhupada is catching that particular point. He is explaining. Mataji, continue reading it. Again, start from the beginning. Okay, ma'am. The gopis had assured Krishna that they were his eternal servants and would do whatever he said, and thus they were now defeated by their own words. If they delayed any longer, they thought some other man might come along, and this would be unbearable for them. The gopis loved Krishna so much that even in that awkward situation, their attachment to him was increasing more and more, and they were very eager to stay in his company. Thus, they did not even consider drowning themselves in the river because of the embarrassing situation. They concluded that they could do nothing but go forward to their beloved Krishna, putting aside their embarrassment. Thus, the gopis assured each other that there was no alternative and rose up out of water to meet him. Thank you, Prabhu. यहाँ एम्बरासिंग सिचुएशन आ गया, राइट? यहाँ देखिए हमारा जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आता है, हम लोग ऐसे समर्पित करते हैं भगवान. हरे कृष्णा. प्लीज बी अटेंटिव. हमको भी हमारा जीवन में ऐसी परिस्थिति कभी कभी होता है, राइट? हम लोग ऐसी परिस्थिति में भगवान को पूरी तरह समर्पित करता है, नहीं करता है? बताओ. करता है? बताओ कैसे करता है? When a situation comes, I cannot do anything. Then I say, Lord, please take care. But after that? After that, He takes care. Yes. After taking care, what I does? Okay, it's only temporary thing, right? इसको क्या कहता है? Not a complete शरणागति. यहाँ तो उन्होंने पूरी तरह से समर्पित किया है. So that means I'll tell you, Hare Krishna, one more time. Even we can see that Bhagavad Gita. What is that 4 type of devotees, right? What is it? Artho. We are also, right? When there's a deep trouble, as he said, we go and beg. The moment you come out, who comes? Occupies. Maya comes, right? You forget who helped us. But certain devotees are very prompt, go and thank the Lord and remain constantly. This is called pure devotional service. Very simple. Clear? So take a very good example of Kunti Maharani. She said, give n number of troubles. That means she wants to be with him constantly and wants to see him constantly and wants to see him constantly for what? To get out of this cycle. But we want to enjoy this material world. That's why you can't get it. Clear? Hare Krishna. Moving on to shloka number 18. Bhagavan ahata vikshya shuddha bhava prasaditaha skande nidhaya vasamsi pritaha provacha sasmitam. Okay. Can I request? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? पढ़िए. लता माता जी पढ़िए. माँ ये बीकानेर से अटक कर रही है हमेशा. शब्दार्थ है प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा. जय श्री प्रभुपाद. भगवान द्वारा आहत विहिल्य वीक्ष्य देखकर शुद्ध शुद्ध भाव स्नेह से प्रसादित संतुष्ट स्कंदे अपने कंधे पर निधाय रखकर वासांसी उनके वस्त्र प्रीतः प्यार से प्रोवाच बोले संस्तम हंसते हुए. अनुवाद. जब श्री भगवान ने देखा कि गोपियां किस प्रकार से विहल हैं, तो वे उनके शुद्ध प्रेम भाव से संतुष्ट हो गए. उन्होंने अपने कंधे पर उनके वस्त्र उठा लिए और हंसते हुए उनसे बड़े ही स्नेह पूर्वक बोले. तात्पर्य. श्रील प्रभुपाद की टीका है. गोपियों का सहज समर्पण इतना शुद्ध था कि भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही उनसे प्रसन्न हो गए. जिन कुमारी गोपियों ने कात्यायनी से भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की प्रार्थना की थी, इस प्रकार से वे प्रसन्न हो गई. कोई स्त्री अपने पति के अतिरिक्त के समक्ष नग्न नहीं हो सकती. कुमारी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में चाहा था
और उन्होंने इस प्रकार उनकी इच्छा पूरी कर दी। गोपियों जैसी कुलीन युवतियों के लिए किसी युवक के समक्ष नग्न खड़ी होकर होना मृत्यु से भी कष्टकर था। फिर भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के आनंद के लिए सब कुछ त्यागने का निश्चय किया। भगवान श्री कृष्ण अपने प्रति उनकी प्रेमा शक्ति को देखना चाहते थे और वे उनकी अनन्य भक्ति से पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो गए। हरे कृष्ण। One minute. I am missing that. Wait. Okay, I got it. I was looking at 17. That's a mistake. Now we are in 18, right? Okay. So translation, when the Supreme Lord saw how the gopis were stuck with the embarrassment, he is satisfied by their pure loving affection. देखिए एक ही शब्द क्या लिखा है, शुद्ध प्रेम। इससे भगवान क्या हो गया, प्रसन्न हो गया। क्या कारण है, अपने आप को उन्होंने पूरी तरफ से समर्पित किया है बिना शर्त। हम लोग क्या करते हैं, हर चीज के लिए ये करेगा तो वो करेगा, वो करेगा तो वो करेगा। बच्चों को भी कुछ करो बोलेगा तो क्या देगा, राइट? क्योंकि जैसे कृष्णा भावनामृत में जो प्राकृत भक्त आता ना, वो लोग हमेशा देखता है ऐसे कुछ है क्या। हमारा अनुभव में बताता हूँ, कोई ऐसी इतना नियम वगैरह बोलेगा तो वो बोलेगा ओ ये छोड़ के दूसरा जगह जाए, ऐसे होने वाला है। मगर इसमें आने के बाद भी कोई को थोड़ा उन लोगों को यम नियम पालन करने के लिए हो सकता है, आगे कुछ कष्ट आ गया तो वो सोचेगा ओ इसमें ठीक नहीं दिखता है, मैं दूसरा जगह। मगर संपूर्ण शरणागति करने के लिए यहाँ तो गोपियों ने सब तैयारी की। भगवान यही सोचे थे, ये इसका मनोभाव क्या होता है। Is it clear? So the gopis or the kumarikas were very clear about their determination also. वहां ऊपर देखा था भगवान का डिटर्मिनेशन, यहाँ गोपियों का डिटर्मिनेशन, कुमारिका को डिटर्मिनेशन क्या है, पति बनना चाहिए कृष्ण हमको, बस इतना ही। So this is what it says. So Prabhupada comments, simple presentation was so pure and that Lord immediately became pleased with them. What is the word? Simple presentation. दाम दूम से करने के लिए कुछ नहीं है, देखिए। इसलिए भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में, सिंपल। जोर से बोलो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उर्वरदम अस्मामि प्रयत्नम। ओके, इसमें सिंपल तो चार चीज है, मगर और एक चीज है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट अमूल्य है। ओके, भक्ति पूर्वक ये चारों करेगा तो भगवान स्वीकार करने वाला है, right? So this is what the Kumarikas were ready to do that. So they were forgetting about the embarrassing situation. Hare Krishna, this is a very important aspect, right? Understand? वहां उसी समय उन्होंने क्या किया, किसको त्याग किया, वो embarrassment को त्याग किया। They never thought, oh, it's an embarrassing situation, I cannot go out. But when Krishna was determined, then they said, oh, this is the right place for us. That means he will take care of us forever in lifetime. आजकल बातचीत होता है, हाँ? शादी के पहले कितना समय बात करता है, फिर भी उन लोगों के बीच में जमने के लिए समय लगता है, right? Because the understanding and determination is not so strong. But here, determination is so strong from Krishna. On seeing that, the girls felt it. Oh, this is the person we want. For that also, what is required? क्या चाहिए? बुद्धि. कौन दे रहा है? So it's very simple. That's why Mahaprabhu repeatedly says the topmost is what? Prema Bhakti. So you all might know the conversation between Ramananda and Chaitanya Mahaprabhu. Everything he knocks down. Even Varnashrama Dharma also Mahaprabhu said no, it's outward. लास्ट में जो कहता है ब्रजवासी गोपियों का जो प्रेम भाव है सबसे उत्तम. So here we can, so I am telling, no, we have to understand, though it looks like a conversation, all these things,
but one should understand the essence is this is the pure loving devotional service. Hare Krishna. Again, shloka sankhya 19. Yuyam vivastra yadapo drihata vrata vyagha tait tadu deva helanam Bhaddhavanchalim Murdni Apanuthaye Amhasaha Kritva Namohdho Vasanam Pratigrihyatam. Sorry, Pragrihyatam. Pragrihyatam. Okay. So I request Sham, read it. Naked, yet because apaha in the water, Apaha in the water, Drita while executing a Vedic ritualistic vow, Vyagahata, Vedic, this you indeed Devaheranam, an offense against Varuna and the other god. Patva Anjali, with palms joined together. Urdhini, upon your heads. Apanu Taye, for counteracting. Amhasa, your sinful action. Katvanama, paying obeisance. Adha Vasanam, your lower garments. Pragyahata. No. Please take Pragriyatam. Please take back. Madhu, read the translation. Lord Krishna said, "You girls bathe naked while executing your vow, and that is certainly an offense against the demigods. To counteract your sin, you should offer obeisances. While placing your joined palms above your heads, then you should take back your garments." Next, condition 2. What does he say? Again, he is giving a reason for it. ऐसी नहीं बताता है, right? क्या बता रहा है? वरुण देव को अपराध किया है आपने. शास्त्र में लिखा है, भगवान जो कहते हैं सत्य है. कुछ समय के पहले बताया ना, शास्त्र में लिखा है कोई भी अगर स्नान करेगा तो 2 वस्त्र शरीर में होना चाहिए. इसलिए नदियों में स्नान करते वक्त प्रभु लोग 2 वस्त्र के साथ, स्त्री लोग तो 2 ही है. So this is all very important. It's a very important. Again, I repeated it. The body should have 2 vastras when we take bath, whether it is river or anywhere. Always you have to have 2 vastras on your body to take bath. That's why here Krishna is telling you have done aparadh to the Varuna Dev, do dandavat to nullify. Clear? Okay, so purport somebody has to read it, no? Demantamma. In other words, the gopis could no longer enjoy the naked beauty. Krishna is the supreme absolute truth. He was acting to fulfill the desire of the uncovered worlds of the world. In this world, we will certainly become lusty in the situation. But to compare ourselves with God is a great offense. Because of this offense, we will not be able to understand this transit interpretation. Or we will only take him to be deteriorated. Also, there is absolute sight of Krishna is certainly a great disaster for one trying to relish the bliss of the simplicity. Hare Krishna. So Krishna wanted to see the full surrender of the gopis. That's he ordered them. Offer obeisances with both arms, join with both hands. See, what is the lesson here again? When we do the pranam, men folk or women folk, what did Krishna says? Right? For this only that Om Govind Prabhu, he was talking about the shloka. What is that?
Bahubhyancha parasparam prapannam pahi mamisha. So here also Krishna is explaining, what does he say? Your joined palms above your heads. That's why many people, and the other day also Amarendra Prabhu was telling, no, like this, many do it, no? Have you seen that? Especially Tamil Nadu, Kerala, it's a very bad habit. I do not know about Karnataka, Andhra, but Kerala too much. I say correct. They do that. Like this, huh? Like this also there are. Let us not do the cross. Huh? In Christianity, they do it, right? But we should not. Okay, why I'm telling you, the thing is very simple. See, for us, in devotional service, everything is shastric and scientific and logical. Right? So when we raise this, it denotes one thing. That is thanking the Lord. Kritanjali. What is that? It's called as what? Kritanjali. So, इसके बारे में विस्तार से प्रभुपाद दूसरा जगह पे बताते कहा यही 11वां अध्याय में पहला स्कंद में जैसी उन्होंने द्वारका में प्रवेश करते हुए सभी ये लोग उनको ऐसी कृतांजलि दोनों हाथ हैंड शेकिंग नहीं है हमारा. This is what you have to understand. Okay, so here we should not foolishly think Lord Krishna is an ordinary lusty boy enjoying naked beauty. So his absolute truth, he was acting to fulfill the loving desires of the Vrindavana gopis. उनको इच्छा को पूर्ति करने के लिए भगवान ऐसी लीलाएं किया है. So this is what the understanding of the acharyas, and we are following the acharyas and we are following the guru, and our understanding should be like this, and we cannot have our own concoction. What is that? Concoction. Okay. So Prabhupada condemns it, right? Speculation and concoction, Prabhupada condemns it. So it's very clear. So again, the sentence goes like this. But to compare ourselves to God is a great offense. And because of this offense, we will not be able to understand Krishna's transcendental position. For this reason, only Prabhupada says, जो भी व्यक्ति पहला गीता पढ़ेगा तो भगवान का उसके बाद भागवतम आएगा तो ठीक से समझ सकते हैं उनका लीला. Okay, so moving on to 20. इति अच्युतेना विहितं प्रजा भला मत्वा इति अच्युतेना विहितं प्रजा भला मत्वा विवस्त्रा प्लवानं व्रतच्युतिं तत्पूर्ति कामास्तत् अशेष कर्मणां साक्षात्कृतं मे नेमोर अवध्य मृग यतः. ओके, ऑनलाइन में कोई इंतजार है उनको जानते नहीं पड़ेगा. ओके, okay, here somebody can read the word. Vasanta Madhava. Only the synonyms, you do it fast. Iti in these words, Achyutena, by the infallible Supreme Lord. Avhihitam indicated Vraja Abalaha, the girls of Vraja. Matva, considering Vivatsra, naked. Aflavanam, the bathing. Vraja Chitam, a fall down from their robe. Tat Puti, the successful completion of that. Kamaha, intently desiring of that performance. Ashesha karma and of unlimited other pious activities. Shakshat kritam, to the directly manifest fruit. Nemuhu, they offered their obeisances. Avadhya mrit, the cleanser of all sins. Yataha, because. हरे कृष्णा. आह्लादिनी माता जी अनुवाद पढ़िए. हरे कृष्णा प्रभु. इस तरह वृंदावन की उन युवतियों ने कृष्ण द्वारा कहे गए वचनों पर विचार करके यह मान लिया कि नदी में नग्न स्नान करने से वे अपने व्रत से पतित हुई हैं, किंतु तो भी वे अपना व्रत पूरा करना चाहती थी, और चूंकि भगवान कृष्ण समस्त पुण्य कर्मों के प्रत्यक्ष चरम फल हैं, अतः अपने पापों को धो डालने के उद्देश्य से उन्होंने कृष्ण को नमस्कार किया. हरे कृष्णा. तात्पर्य के लिए मैं बुलाता हूँ बालकृष्ण प्रभु, ड्राई डॉक. बालकृष्ण प्रभु. हरे कृष्णा. प्रणाम प्रभु. हरे कृष्णा.
तात्पर्य भाई श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। यहाँ पर कृष्ण भावनामृत की दिव्य स्थिति का सुस्पष्ट वर्णन हुआ है। गोपियों ने निश्चय किया कि अपने कथाकथित पारिवारिक परस्परा और पारस्परिक नैतिकता को त्याग कर भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करना श्रेयस्कर है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन अनैतिक कार्यों का समर्थन है। वस्तुतः इस्कॉन के भक्त संयम तथा सच्चरित्रता के सर्वोच्च मानदंड का पालन करते हैं, किंतु उसी के साथ हम कृष्ण की दिव्य स्थिति को मान्यता प्रदान करते हैं। भगवान कृष्ण ईश्वर हैं, अतः उनके मन में युवतियों के साथ भोग विलास की कोई इच्छा नहीं रहती। जैसा कि इस अध्याय में आगे देखा जाएगा, कृष्ण गोपियों के साथ भोग करने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं थे। प्रत्युत वे उनके प्रेम से आकृष्ट थे और उनको तुष्ट करना चाह रहे थे। सबसे बड़ा अपराध तो भगवान कृष्ण के कार्यकलापों की नकल करना है। भारत में प्राकृतिक सहजीवियों का एक वर्ग है जो कृष्ण के इन कार्यकलापों की नकल करता है और कृष्ण पूजा के नाम पर नग्न तरुणियों का भोग करना चाहता है। इस्कॉन आंदोलन धर्म के इस उपहास का डटकर विरोध करता है, क्योंकि मनुष्य के लिए भगवान का हास्यास्पद अनुकरण सबसे बड़ा अपराध है। इस्कॉन आंदोलन में सस्ते अवतारों का अभाव है और इस आंदोलन का कोई भी भक्त अपने को कृष्ण के पद तक ऊपर नहीं उठा सकता। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सो यहाँ देख सकते हैं, और भी कुछ पढ़ने के लिए है, थोड़ा मैं एक्सप्लेन करके फिर आगे जाता हूँ। यहाँ सभी गोपियों ने सोच ली थी, हम लोग तो उद्देश्य किया है ये व्रत पालन करना है। व्रत कैसे पालन करना कुछ समय के पहले बताया ना, श्रद्धा पूर्वक, उसमें अपराध ना हो, राइट। ये तो भगवान ने उनको पॉइंट आउट किया है, आप अपराध किया, क्या अपराध किया है? बिना वस्त्र स्नान किया है। अभी वो लोग सोच रहे हैं अगर हम लोग ऐसे अपराध किया होगा तो व्रत का भंग हो जाता है। So they don't want to do that because they have to satisfy Krishna in full. Right? Understand? That's why whenever we perform any vrata, we have to give our full. That's very important. So here वो लोग एक छोटी सी कुछ अपराध भी नहीं करने के लिए सोच रही थी, इसलिए उन्होंने सोची थी ऐसे ही भगवान उनको आज्ञा को पालन करने के लिए बोल देता है। यहाँ भी उन्होंने आज्ञा जो देता है उनको प्रीति के लिए। So we are supposed to fulfill that also. The first one is they came out ready to take the clothes. Then again Bhagavan says you have taken bath without dress, so you have to come and do a namaskar and take it. So all the two conditions they fulfill it, right? At that time they have given up all their assumptions or anything of that time. They didn't want to go through that. Even if it is an embarrassing situation, they are ready to do that. I'll tell you one thing. See, हम लोग कोई नया भक्त आता है, उसको थोड़ा नाचो करके बोलेगा तो क्या बोलते हो? मगर हम लोग को तुरंत अभी श्लोका पढ़ो, प्रभु मेरे को आता नहीं, क्या बोलता है? कीर्तन करो, हाँ गले ठीक नहीं है। So we got n number of reasons to avoid it, but one should do it. See, I'll tell you. देखिए, भगवान हमको सब कुछ प्रदान किया है, किसी को इसमें संदेह है? हाथ उठा। I'll say in English. Has the Lord has given everything to us or not? Raise your hands. Yes. I think you did not. Has the Lord has given everything to us or not? Yes. More than what we do. हाथ उठाना चाहिए ना, यस बोलेगा तो फिर भी एक दो हाथ। हिंदी में नो वाला क्वेश्चन पूछा आपने। नहीं, हिंदी में क्या बोला था? अगर भगवान ने किसी को नहीं दिया है क्या? सवाल ऐसे ही। So we have to understand the Lord has given us everything, but unfortunately we don't know how He has given us, and we think, oh, with my hard work I earned everything.
So many buildings, so many bank balance, everything. But nobody attribute or dedicate this to the Lord. That's why here the gopis understood everything should be submitted to the Lord. So when they did aparad, they thought it is high time we have to complete the vrata in perfection. Even in the Tirupavai also, many places, what they say, the vrata should be completed in a proper way. And what do they say further? We are all not a qualified person, but still we are trying to do our best. So what do they ask now? If any aparad is said, please forgive. Here also, Krishna pointed out the aparad and they are supposed to clear it. That means they will not have any papa account. Clear? Okay. So moving on to the next paragraphs. Oh, it's yeah. Correct or not? Yes, Only yes, two correct. paragraphs we have Yeah, yeah. finished. Okay, next paragraph. यहाँ किसी को बोलना पड़ेगा. Ankara Gopi. English. Yeah. You read one paragraph, you give it the next paragraph to Prabhu. Quick. Let us go fast. 500 years ago, Krishna appeared as Lord Chaitanya Mahaprabhu, who practiced strict celibacy throughout his student life, and at the age of 24 took sannyasa, a lifelong vow of celibacy. Chaitanya Mahaprabhu immediately avoided contact with women in order to carry out his vow of loving service to Krishna. When Krishna personally appeared 5,000 years ago, he exhibited these wonderful pastimes which attract our attention. We should not become envious or shocked when we hear that God can perform such pastimes. Our shock is due to our ignorance, because if we try to perform these activities, our bodies would be afflicted by lust. Lord Krishna, however, is the supreme absolute truth and is therefore never disturbed by any material desires whatsoever. Thus, this incident in which the gopis gave up normal standards of morality and raising their hands to their head, bowed down in compliance with Krishna's order, is an example of pure devotional surrender and not a discrepancy in religious festivals. क्या शब्द उपयोग किया प्रभुपाद ने? ये तो शुद्ध भक्ति का शरणागति. आगे क्या लिखता है? इसमें किसी को कुछ शास्त्रिक शंका नहीं होना चाहिए. पहला पैराग्राफ में भी भगवान क्या बता रहे थे? This we have to remember it again and again. It's a very important thing. You should not forget it. भगवान को नकल करना बहुत बड़ा अपराध है. यहाँ ये पैराग्राफ में क्या बता रहे? ऐसी कोई करेगा तो उनको क्या होता है? भौतिक आशा और काम वासना और बढ़ेगा तो ये चक्कर में आना पड़ेगा, जन्म मृत्यु में. That's the danda we get it. So we have to अनुचरण करना है, अनुकरण नहीं करना, नकल नहीं करना चाहिए. क्योंकि ये लीला के अंदर जितना भी है सब कुछ तो शास्त्र के अनुसार है. इसमें विधि कुछ भी भगवान तोड़ा ही नहीं, ये याद रखना. बाकी विषय में उन्होंने बहुत कुछ किया है चाल, वो अलग बात है. राइट? कुरुक्षेत्र में बहुत कुछ चाल किया. क्यों किया है? वो लोग इतना अन्याय किया. किसके ऊपर? पांडवों को ऊपर. So this is what the real superposition of Krishna. जैसे कि ड्रामा करते हैं भगवान का नकल करते हैं भगवान के या भगवान बन जाते हैं. प्रभु पूछ रहा है कभी कभी नाटक में हमको भगवान का रोल मिल जाता है. राइट? वो नकल नहीं है, मगर मन में ये भावना होना चाहिए मैं दास हूं, भगवान को भाग हमको मिल गया, हम ठीक से करना. भावना ठीक होना चाहिए. क्लियर? वहां नकल नहीं होता है. राइट? क्योंकि ये हम लोग से अभी देखिए, जितना भी हम आप लोग सुना होगा नाट्य नाटकम बोलते हैं, साउथ में ये ज्यादा है. नृत्य करते हुए एक नाटक भी उसके साथ चलता है. जितना भी भरतनाट्यम है, हर एक भरतनाट्यम में जितना भी उसका अंदर है पूरा भगवान का लीला का ही उसको वर्णन होता है. राइट? इफ यू लुक एट Tyagaraja Swami, he has described everything about Rama. At the same time, he has described about Krishna also.
Even when we talk about Purandaras, when we talk about so many acharyas, they sing the glories and they make it very clear. It is just a performance of every art in the full satisfaction of Krishna. अभी भरतनाट्यम क्यों करता है? भगवान को प्रीति करने के लिए. कल हम लोग देखा था जैसी क्या नाम है कालिया को उन्होंने ऊपर इतना नाच रहा था, राइट? नर्तक उससे बढ़कर और कोई नहीं है. फिर भरतनाट्यम काय के लिए? भगवान को प्रीति करने के लिए, राइट? नाटक क्यों के लिए? भगवान को प्रीति करने के लिए, राइट? उत्साह से हम लोग करते हैं, राइट? अभी उत्सव मनाया, उत्सव में हम लोग नाटक किया, क्यों? उत्साह से कर रहे, दूसरों को सिखाने के लिए, राइट? वहां तो हम लोग भगवान नहीं बनता है. वेशन, राइट? धारी है, उसको क्या बोलता है? ये अप्लाई दैट हरिधारी, हरिधारा or whatever. So we are applying that. Okay. So we have to understand here. So clear? Hare Krishna. Last paragraph. प्रभु पढ़िए. आपका नाम बताइए. किशोर चैतन्य. प्रभु पढ़िए. In fact, the Gopis surrender is the perfection of all religion. As Srila Prabhupada describes in Krishna, the Supreme Personality of Godhead, the Gopis were all simple souls, and whatever Krishna said, they took to be true. In order to be free from the wrath of Vrindavana, in order to be free from the wrath of Varnadeva, as well as to fulfill the desired end of their goals, and ultimately to please their worshipable Lord Krishna, they immediately abided by his order. Thus, they became the greatest lovers of Krishna and his most obedient servitors. Nothing can compare with the Krishna consciousness of the Gopis. Actually, the Gopis did not care for Varuna or any other demigod. They only wanted to satisfy Krishna. हरे कृष्णा. देखिए लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कृष्ण को प्रीति करना चाहिए, मगर बीच में भगवान क्या बता रहे? अपना शिष्य और अपना भक्त को भी अपराध नहीं करना चाहिए बताते. इसमें से भी एक निष्कर्ष निकलता है, वैष्णव को अपराध नहीं करना चाहिए. वरुण कौन है? भगवान को सेवन करता है. But at the same time, Prabhupada did not care for Varuna. They did not care, but at the same time, Krishna wanted to do it, they do it. Understood? इसलिए हर जगह पे हम लोग को मालूम होना चाहिए, देवी देवता को मर्यादा देना है, मगर भक्ति तो भगवान को करना है. इसमें संदेह नहीं होना चाहिए. So only to please Krishna, not to please the devatas. Right? It is only to honor them. That's why Prabhupada writes, the gopis did not care for Varuna or any other devatas, but they only wanted to satisfy Krishna. Okay. So this is the essence of it. So they took to true in order to free from the wrath of Varunadev. Because Krishna said it's aparad. Why? Because he does not want to leave his devotees also. It's another aspect of it, looking at it. Clear? Okay. So moving on, next sloka 21. Tastata vanata drishtva Bhagavan devaki sutaha vasamsi tabhyah prayachat karunastena toshitaha. Okay, I will call some devotee online. I have to give them chance. इसका चांस नहीं मिला इसमें. सुमति माता जी पढ़िए माँ. शब्दार्थ सुमति माता जी. She is not answering. Okay. Pratik, read the synonyms. Synonyms. Ta, then, tatha, thus, av, nataha, bow down, drishtva, seen, Bhagwan, the Supreme Personality of Godhead, Devaki Sutaha, Krishna, the son of Devaki, Vasamsi, the garments, Tabhyaha, to them, Prayachat, he returned, Karunaha, compassionate,
tena by that act, toshitah satisfied. हरे कृष्णा। रमेश अदनानी प्रभु ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। Translation by disciples of Srila Prabhupada, Jai Prabhupada. Seeing them bowed down like that, the Supreme Personality of Godhead, the son of Devaki, gave them back their garments, feeling compassionate toward them and satisfied by their act. Hare Krishna Prabhu. Thank you. Seeing them bowing down like that, Supreme Personality of Godhead, the son of Devaki, gave them back their garments, feeling compassionate toward them and satisfied by the act. Okay? Compassionate, and the next word is satisfied. See, I'll tell you. Bhagavad Gita again, he says, ये यथामा प्रपत्ति. यहाँ प्रपत्ति बराबर क्या है? इसलिए भगवान संपूर्ण संतुष्ट हो गया, प्रसन्न हो गया. श्लोका नंबर 22. दृढ़ं प्रलब्धास्त्रपया च हापिताः प्रस्तोभिताः क्रीडन पच कारिताः वस्त्राणि चैव वस्त्राणि. Sorry, wait. Hare Krishna. Others read within yourself, please. वस्त्राणि चैव पहृतानि अथापि अमुं तानाभ्य सूयं प्रियसंग निवृत्ताः. ओके, निवृत्ताः. हरिप्रेम प्रभु शब्दार्थ पढ़िए. हरिप्रेम. हरे कृष्ण प्रभु जी. हाँ प्रभु जी हिंदी नहीं आएगा? आएगा. आ गया? नहीं आया प्रभु जी, इंग्लिश है सर. है हमारे पास, तो निकालने में थोड़ा टाइम जाएगा. अच्छा, वो गार्डन से ड्राई डॉक तक आने का ना टाइम लगता है. विद्यागति प्रभु का ये है ना. आ गया? नहीं आया, इंग्लिश है. किधर आया? नहीं अभी आ रहा है ना. आ गया. शब्दार्थ में शीला प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा दृढ़म पूरी तरह से साइलेंस. हाँ पढ़िए प्रभु शब्दार्थ. दृढ़म बुरी तरह से प्रलब्धा ठगी हुई त्रया अपनी लज्जा से च तथा हापिता वंचित प्रस्तोभिता मजाक उड़ाई गई क्रीडन वत गुड़ियों की तरह च तथा कारिता करने के लिए बाध्य की गई वस्त्राणी उनके वस्त्र च तथा एव निसंदेह अपहृतानि चुराए हुए अथ अपि तो भी अमुम उनके प्रति ताह वे न अभ्यसूयन शत्रु भाव नहीं लाई प्रिय अपने प्रियतम का संग साथ करने से निर्वेता हर्षित. हरे कृष्ण. अनुवाद के लिए मैं बुलाता हूँ कमलमुखी माता जी. क्विक. हरे कृष्ण प्रभु. अनुवाद बाय श्रील प्रभुपाद डिसाइपल श्रील प्रभुपाद की जय. यद्यपि गोपियां बुरी तरह ठगी जा चुकी थी, उनके शील संकोच से उन्हें वंचित किया जा चुका था, उन्हें कठपुतलियों की तरह नचाया गया था और उनका उपहास किया गया था, और यद्यपि उनके वस्त्र चुराए गए थे, किंतु उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति रंच भर भी प्रतिकूल भाव नहीं आया. उल्टे वे अपने प्रियतम के सानिध्य का यह अवसर पाकर सहज रूप से पुलकित थी. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण. रघु प्रभु.
तात्पर्य प्रभुपाद की टीका है, गोपियों के इस मनोभाव का वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा हुआ है। जब वे प्रार्थना करते हैं, हे भगवान कृष्ण, आप चाहे मेरा आलिंगन करें या अपने पैरों के नीचे रौंद डालें या मेरे समक्ष कभी भी उपस्थित न होकर मेरे हृदय को तोड़ दें, आप जो चाहें सो कर सकते हैं, क्योंकि आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। किंतु इतना सब करने पर भी आप सदैव मेरे स्वामी हैं, मेरा कोई पूजा आराधना नहीं है। कृष्ण के प्रति गोपियों का यही मनोभाव है। हरे कृष्णा। ये सवाल पूछे तो सब लोग हाथ उठेगा। सवाल भी मुझे बताए। ये तो नेक्स्ट जनरेशन रेडी हो गया भागवत करने के लिए। गुड, वेरी गुड। चलो देखिए, हम लोग पढ़ते हैं मगर अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, रोज पढ़ता है ना शिक्षा है, हाँ पढ़ता है, राइट? उसमें जो लिखा है, अगर उन लात मारेगा तो क्या करेगा? ओ मैं इतना परिक्रमा किया, मेरे को दुख आ गया, बोलते नहीं बोलते? हाँ ये बात सही है, ये बात सही है। नहीं, क्योंकि पढ़ते हुए उसको प्रयोजन ये जरूरी है, एप्लीकेशन। दैट्स व्हाई, क्योंकि प्रभुपाद ये नियम बनाया क्यों, मंगलारती में ऐसे ऐसे करना चाहिए करते हैं, क्योंकि हर चीज को हम लोग ग्रहण करना है। शिक्षाटकम बोलेंगे तो 8 है, मगर 8 का अंदर 8 लाखों का शिक्षा है उसका, एक नहीं है, अनेक, इसलिए बोला 8 लाखों का उसका अंदर। हर एक को हम लोग अप्लाई करना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, because each and every, similarly the 10 offenses is also something very superfluous, you can't imagine. Hare Krishna. Moving on to the 23. Paridaya swa vasamsi preshta sangama sajjitaha grihita chitta no selus tasmin lajja ite kshanaha. Okay, okay, Sumangala. Their own governments. Krishna of the beloved son fighters to live. Taking away mind, good knowledge, indeed. Move the skin upon him. Lajjaita, full of shyness. Whose glances. Hare Krishna. Rati Manjari Mataji, translation. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Translation by disciples of Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. The gopis were addicted to associating with their beloved Krishna. हाथ उठाइए, पढ़ने को जो इच्छा है हाथ उठाओ. Oh, very good. Next you will get it. Okay. Mataji, complete the translation, please. The gopis were addicted to associating with their beloved Krishna, and thus they became captivated by him. Thus, even after putting their clothes on, they did not move. They simply remained where they were, shyly glancing at him. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. See, 1 minute. Pull it down. This one important line, Hare Krishna, ध्यान पूर्वक सुनिए. यहाँ लिखा है, the gopis were addicted to associating with the Lord, and thus they were become captivated by him. 2 विषय है, एक तो आकर्षण, भगवान के ऊपर हमको इतना आकर्षण आता है क्या? नहीं है, कम है, right? Then, if how it comes attraction, only when you want to associate with him all the time. So, is it possible for us to associate with the Lord directly? अब दूसरा उपाय क्या है? Oh, that's a good thing. Then, so
What is more important? Addicted to association is important. Right? हम लोग कुछ ना कुछ कारण बोल के ओ आज इस सत्संग में नहीं आ सकते, सॉरी, आसानी से बोलता है, राइट? दृढ़ता नहीं है। फिर कैसे हमको आकर्षण आएगा भगवान के ऊपर? सत्संग में क्या होता है? भगवान का नाम, लीला, गुण, रूप, उसमें एक ही में हमको रुचि आएगा तो प्रभुपाद बताते हैं यू आर गोइंग टॉप मोस्ट. So that's why never miss association. That's why tolaya malave napi. Right? Okay. Purport के लिए माता जी हाथ उठी. हाँ, पढ़िए माँ. Purport. By association with their beloved Krishna, the gopis had become more attached to him than ever. Just as Krishna had stolen their clothes, he had also stolen their mind and their love. The gopis interpreted the whole incident as proof that Krishna was also attached to them. Otherwise, why would he have gone to the trouble of playing with them in this way? Because they thought that Krishna was now attached to them, they glanced at him with shyness, and being stunned by the rising of their ecstatic love, they could not move from where they stood. Krishna had overcome their shyness and forced them to come out of the water naked. But now, having dressed properly, they again became shy in his presence. In fact, this incident increased their humbleness before Krishna. They did not want Krishna to see them staring at him, but they cautiously took the opportunity to glance at the Lord. Hare Krishna. This is Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Such a wonderful purport. Can't imagine that. देखिए, उन लोगों को हृदय के अंदर क्या था? संकोच. They were having all that shyness, शर्म. मगर जैसी बाहर आने की बाद भी, इतना पूरा वस्त्र पहनने की बाद भी, उनको सीधा आंखों देखने के लिए तैयार. Nowadays you cannot talk about this. It's completely blown off. Correct or not? There is no such thing. So क्या कर रहा है? चित्तवन. भगवान को क्या करती है वो? चित्तवन से, right? ये कुछ भी नहीं है. हमको आगे देखेगा तो again the first canto also in the 10th chapter, जैसे उन्होंने हस्तिनापुर से रवाना हो रहे, कहाँ के लिए? द्वारका के लिए. वहां जितना भी स्त्रियों सब लोग बाहर खड़ी है, कोई ऊपरिका में खड़ी है. खड़ी होकर वो लोग भगवान को देखते हुए कभी कभी उनको मन में क्या होता है? शर्म आता है. क्यों? भगवान को सामने देखने के. तो इतना आकर्षण करने वाले हर एक को, राइट? कोई को भगवान कैसी आधार प्रदान किया है? उनका पुत्र को आलिंगन करते हुए उनका इच्छा को पूर्ति किया. समझ में आता ना? हमारा पुत्र को करेगा तो क्या होता है? माँ को संतुष्ट. So this is the way the Lord reciprocates, because he is residing in everyone's heart, right? He knows. So those who are Rajakumaris or who are there in the हस्तिनापुर, हर एक को भगवान कैसे प्रीति किया है? उनको मन में जो इच्छा था, उनका पुत्र को आलिंगन किया, उससे से माँ को संतुष्ट हो गया. So यहाँ भी गोपियों ने क्या किया? इतना मन में उनको शर्म है, मगर देखने के लिए सामने नहीं होता है. In olden days it was all there, but now it is. Okay, so we have to understand. प्रभुपाद हमेशा क्या बताता है? मंदिर में जाके भगवान को दर्शन करके आ जाए, राइट? हम लोग क्या बोलते हैं? कभी कभी कृपा करके दर्शन दो करके बोलते हैं, राइट? मगर प्रभुपाद उससे आगे क्या बताता है? अगर भगवान हमको चितवन किया क्या? यही सवाल है. That is a complete darshan, right? The Lord has to shower his glance on us, then the darshan completes. But we never look at it. Oh, darshan करके आ जाओ. अनेक कारण है दौड़ने के लिए, राइट? ऑफिस टाइम पे जाना है, गाड़ी डबल पार्किंग है, नया चप्पल है, सब कुछ. So I tell you, we are not able to see why I am telling now. Try to understand. These are the distraction for us.
क्योंकि दृढ़ता बोलेगा तो ये एकदम खड़ा होना चाहिए, जो भी होने तो। यहाँ वो क्या किया? The embarrassing situation, they broke all those conditions. सर्वधर्मान परित्यज्य, this is that. इसलिए प्रभुपाद क्या लिखता है? So one should understand the essence of this. That's why the last sentence is something very. In fact, this incident increased their humbleness before Krishna. और आगे क्या बताता है? They did not want to see Krishna staring at him. What's the word? अच्छा नहीं लगेगा, right? मगर आजकल वही होता है. Staring is too much and चित्तवन is खत्म. Hare Krishna. Let us not discuss more on that. Moving on to that. Tasam Vijnaya Bhagavan Swapada Sparsha Kamyaya Drishtva Vratanam. Sorry, Vratanam. Okay, sorry. 1 minute. I will increase the font. Sankalpam Aha Damodharo Abalaha. Okay. Ratna Bhushana. Quick. Shabdat. हरे कृष्ण 1 मिनट है. यहाँ कोई नया भक्त है, मुझे नाम मालूम नहीं है, इसलिए आप थोड़ा हाथ उठाइए, आपका पढ़ सकते हैं. हाँ, ओके, हाँ, यस. Of these girls, Nyaya, understanding, Bhagavan, the supreme personality of Godhead, Swapada of his own feet, Sparsha for the touch, Kamyaya with the desire, Drita Pratana, who had taken their oath, Sankalpam, the motivation, Aha, hope, Damodraha, Lord Damodara, Abalaha, to the girls. हरे कृष्ण. माता जी ट्रांसलेशन बढ़िया. Translation by Srila Prabhupada. The Supreme Lord understood the determination of the gopis in executing their strict vow. The Lord also knew that the girls desired to touch his lotus feet, and thus Lord Damodar, Krishna, spoke to them as children. Hare Krishna. Okay, moving on to that. Sankalpo viditaha sadhyo bhavati nam mad archanam mayanu moditaha so asau satyo bhavitum arhati. प्रभु हाथ उठाया ना आपने, पढ़ो. Sankalpa, the motivation. Vidita, understood. Sadhya, O pious girls. Now, your Matpatnam, worship of me. Maya, by me. Anumodita, approved of. So that Satya, true. Bhagavata, to become. Bharati, must. Hare Krishna. Dimanta, read the translation. Lord Krishna said, O saintly girls, I understand that your real motive in this austerity has been to worship me. That intent of yours is approved of by me, and indeed it must come to pass. Hare Krishna. Mata ji, aap padhiye. Which is Krishna is free from all pure desire. So are the gopis. Their attempt to gain Krishna was therefore motivated not by the desire for personal sense gratification, but by their overwhelming desire to serve Krishna and to please him. Because of their intense love, the gopis did not see Krishna as God, but rather as the most wonderful boy in all creation. And being beautiful young girls, they desired only to please him by loving service. Lord Krishna understood the pure desire of the gopis and was thus satisfied. The Lord could certainly not be satisfied by ordinary lust, but he was moved by the intense loving devotion of the cowherd girls of Vrindavan. हरे कृष्ण. ओके, सो यहाँ अनुवाद में लिखता है भगवान श्री कृष्ण क्या कहता है, वो सेंटली गर्ल्स क्या बोला था पहला, अब तो अपराध किया है वरुण देव को, फिर उनको ठीक करने के लिए भगवान ने प्रायश्चित बताया, वो भी क्लियर कर दिया. राइट, आई अंडरस्टैंड दैट योर रियल मोटिव इन दिस ऑस्टेरिटी हैज बीन टू वर्शिप मी. आराधना नाम सर्वेषाम. राइट, दैट इंटेंट ऑफ योर्स इज अप्रूव्ड ऑफ बाय मी. मैंने उसको ओके कर दिया. एंड इंडीड यू मस्ट पास दैट. ओके, आगे तात्पर्य में एक विशेष शब्द उपयोग किया है. They desired only to please him
by loving service only. What is that? Only to please him. What is the meaning? Only to please him. Unalloyed. Right? One cannot mix up things. This is very important. Okay, moving on to sloka number 26. Namaye avishet asat aveshita dhyam kamaha kamaya kalpate varjita kvatita danaha prayo bijaya neshate. Okay, Hare Krishna. Prabhu, aapka na, you read it word by word. Synonyms not by in me avestita full dhyam of those who consciousness desire kamya to material lust kalpate leads Rajita for kavita to dhana grains praya for the most part vijaya new growth na nishyate are not capable of causing. Translation. Yes, do it. The desire of those who fixedly idly does not lead to material desire for sense gratification. Just as barley corns burned by the sun and then cooked can no longer grow into new sprouts. Wonderful. Okay, in the previous verse, only to serve Krishna, right? What did they say? Only to. But we also serve so many, right? People are Sevinu, Kripana Durjana. But the gopis are not like that, right? They wanted to serve only Krishna. Okay, so in this verse, purport is there, right? Okay. नया भक्त हाथ उठाइए जिनको चांस नहीं मिला क्विक. हाँ, ये नया भक्त. हाँ, पढ़ो क्विक क्विक. हाँ, मधुपति. हाँ. Are significant here unless one has achieved an advanced degree of devotion. One cannot fix the mind and intelligence on Krishna, since Krishna is pure spiritual existence. Self-realization is a state not of desirelessness, but rather of purified desire. Within one desire only the pleasure of Lord Krishna. The gopis were certainly attracted to Krishna in a mood of conjugal love. And yet having fixed their mind, indeed, 26, 38, 12. And their desire could never manifest as a material lust. Rather, it became the most exalted form of love of Godhead ever seen within the universe. Hare Krishna. Aveshita dhyam. The word Maya Aveshita. कुछ श्लोक याद आना चाहिए. प्रॉम्प्ट करेगा तो याद आता है, राइट? वेरी गुड. पूरा श्लोक बताओ. क्विक. पूरा श्लोक वापस एक बार. Chapter. Very good, wonderful. Can we go to that quickly? Let us not delay it. Quick. I tell you, certain phrases I am actually jumping. There are so many phrases we can get, so many slokas. Most twisting here. But since time is there, that's a problem. Yes, mixed with the shloka, I think. Right? So the Vidarbha Mataji, she gets that. Quick.
Mayyaveshita manoyama nityayukta upasate Shraddhaya parayopeta. Veshya manoyama. Same thing, Mayyaveshya. Acha, Veshita it's here. Slightly different. Okay. So go to the quick. Wait. Shri Bhagavan Vacha Mayyaveshita manoyama. Mayyaveshya. Veshya only it is. I said, okay. Mayyaveshita. Okay. Okay, go to the translation. Vasanta. Read the translation quick. Vasant. The Supreme Personality of Godhead said, "Those who fix their minds on my personal form and are always engaged in worshipping me with great and transcendental faith are considered by me to be most perfect." Same thing. Maya, Aveshita, fully absorbed. Here also the same thing, same translation. Aveshya, it's here. Aveshita, it's here. Okay. So moving on to that, here Prabhupada is talking about that word. Unless one has achieved in advanced degree of devotion. So that's why this chapter is called as Bhakti Yoga, and it is the topmost. So Krishna considered this is the topmost level of bhakti. So since Krishna is pure spiritual existence, self-realization is a state of not of desirelessness, but rather of a purified desire, wherein one desires only the pleasure of the Lord. अपना प्रीति के लिए नहीं, भगवान का प्रीति के लिए, भगवत प्रीति करना चाहिए. Right? That's very important. That's why we keep Krishna in the center. The gopis were centrally attracted towards Krishna in the mood of conjugal love, and yet having fixed their mind and indeed the entire existence completely to Krishna. So one can understand the complete surrender of that. Okay. Yatha bhala vrajam siddha mayema ramsyata shapaha yad uddishya vratam idam cherur aryar chanam satihi. Okay, Prabhu. Yada Gona Abala, my dear girls, Raja to Raja, Siddha having achieved our desire, Maya with me, Ima this, Raniksata you will enjoy, Shaka the night, yet which, Udisya having in mind, Ratam wow, Idam this, Cheru you executed, Arya of goddess. Katyayini. Archana. The worship. Kata being pure. Hare Krishna. Prabhu, you read that. Go now, girls, and return to Braja. Your desire is fulfilled. For in my company you will enjoy the coming nights. After all, this was the purpose of your home, to worship goddess Katyayani, O pure-hearted ones. आगे भगवान क्या कहते हैं? जाइए और आपका जो काम इच्छा सब कुछ मैंने संपूर्ण किया है. So you'll enjoy my company on the coming nights. Hare Krishna. After all, this was a pure of your vow worship. Okay, then moving on to Shishuko Vacha Ityata Tishta Bhagavata Labda Kamaha Kumarikaha Dhyayantyasta Tat Padambhojam Krichrana Nirvishur Brajam. Pratik. Shri Shuka Uvacha, Shri Shukdev Goswami said, Iti, thus, Adishtaha instructed, Bhagavata, by the Supreme Personality of Godhead, Labdha, having obtained, Kamaha, their desire, Kumarikaha, the young girls, Dhyayantyaha, meditating, Tat, his, Pada Ambojam, upon the lotus feet, Krichrat, with difficulty, Nirve Vishuhu, they returned, Brajam, to the cowherd village. Translation and purport by Srila Prabhupada disciples, Srila Prabhupada. Shukdev Goswami said, thus instructed by the Supreme Personality of Godhead, the young girls, their desire now fulfilled,
could bring themselves only with great difficulty to return to the village of Braj, meditating all the while upon his lotus feet. Gopi Gita Mataji, purport. Hare Krishna Prabhu. Prabhu Harrier will read. Okay, make it fast. Okay. The gopis' desire was fulfilled because Lord Krishna had agreed to act as their husband. A young girl can never spend a night with any man except her husband. And thus, when Krishna agreed to engage the girls in a nocturnal rasa dance during the coming autumn season, in effect, he was agreeing to reciprocate their love for him in the role of a husband. Hare Krishna. So यहाँ उनको इच्छा को पूर्ति करता कैसे? जैसी पति अपना पत्नी को इच्छा पूर्ति करता वैसे ही भगवान आगे बताता है. मगर हम लोग जो देखेंगे तो भौतिक रीति में वो तो इसको ठीक से समझ नहीं सकते. So one has to understand this is the Lord's important rasa dance. rasa panchadhyay बोलते हैं. आगे हम लोग देखेंगे. So श्लोका number 29. अतः गोपैः परिवृतो भगवान देवकी सुतः वृंदावनात् गतो धूरं चारयन् घा सह ग्रजः. Okay, well, I'm going to quick, make it fast. अथ कुछ समय बाद गोपय ग्वाल बालों से परिवृत घिरे हुए भगवान देवकी पुत्र वृंदावन से गए दूर चारयन चराते हुए गौवें स अग्रजा अपने भाई बलराम के साथ. अनुवाद. कुछ काल बाद देवकी पुत्र कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों से गिरकर तथा अपने बड़े भाई बलराम के संग गौवें चराते हुए वृंदावन से काफी दूर निकल गए. तात्पर्य. गोपियों के वस्त्र हरण का वर्णन कर चुकने के बाद सुखदेव गोस्वामी कुछ कर्मकांडी ब्राह्मणों की पत्नियों को भगवान कृष्ण द्वारा वर दिए जाने की भूमिका प्रारंभ कर रहे हैं. हरे कृष्ण. आगे क्या हुआ? ब्राह्मणों को पत्नी और ब्राह्मण. ओके, उसका बारे में आगे आएंगे. A good distance from the Vrindavan. So moving on to shloka number 30. Nida ghar katape digme chaya bihi swabihi atmanah atha patra itan vikshya druman aha prajaukashah. Okay. So Vasanta Madhava. Nidaka of the hot season, Artha of the sun, Atape in the heat, Stigme, fierce, Shayabihi with the shade, Swabimi, their wounds, Atmanaha for himself, Arthapatraya, serving as umbrellas, Vikshaya, observing, Druman, the trees, Aha, he said, Vrajaokashaha, to the voice of Vraja. Translation: when the sun's heat became intense, Lord Krishna saw that the trees were acting as umbrellas by shading him, and thus he spoke as follows to his boyfriend. हरे कृष्णा. अभी आ गया कौन सा मौसम आने वाला है? So when the sun heat became intense, Krishna saw that trees were acting as umbrellas by shading him, and thus he spoke as follows to his boyfriend. आगे बाकी ग्वाल बाल से बात करने वाला है. भगवत कृपा से हम कल प्रारंभ करेंगे. आज के लिए विराम करेंगे. हरे कृष्णा. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नमस्ते नरसिंहाय
ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जाए। हरे कृष्णा। आज का हमारा यजमान श्रीमान माधव चरण प्रभु और श्रीमती माधवी देवी माता जी और धीमंता। I have been calling them Dhimant father mother, so I am not a when Vidyagati came and said Madhava Charan, this is my record. Okay. Okay, the whole family has been serving Prabhupada and Guru for so many years now, along with so many other devotees here. We pray for them, and we have got special prayers for His Holiness Jayapata Swami Maharaj. Then Prabha Ramesh, again she is in the hospital. It's a must. We have to do intense prayers for her. Then we have prayer requests. Tulsi Govinda, Chitta Hari. Then Prem's father. He is also not well. We have to pray for him also. And in addition to that, for all of us to progress in Krishna Bhakti, like the Gopikas, what is that? We have to follow the footsteps, not to nakal. So we have to grow in Krishna Bhakti. Let's all pray to the Supreme Lord, and especially to the Guru and Parampara. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, 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 Hare